So namaskar all of you. तो आज हमें फर्स्ट क्लास टा स्टार्ट करिबा काली तो जस्ट मु इंट्रोडक्शन देइथिली टीचिंग एप्टीट्यूड टा केमती कोन पढाबो तो आज हमें तारो फर्स्ट क्लास टा स्टार्ट करिबा ओके फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड सो आज रो क्लास रे मेनली हमें टीचिंग एप्टीट्यूड माने कोन एजुकेशन ता ऊपर टिके बेसी बेसिक दिन सोडा देखिबा ओके बट मेनली आजिरो क्लास रो कंटेंट मेन कंटेंट रहइबो आपनकर जो एजुकेशनल फिलोसॉफी सेमती कह गले बहुत गुडे एजुकेशनल फिलोसॉफीज अछि बट देयर आर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशनल फिलोसॉफीज जहा ऊपर हमें फोकस करिबो ओके दैट इज आइडियलिज्म नेचुरलिज्म प्रैग्मेटिज्म ओके तापरे आपनकर रियलिज्म आउ एक्जिस्टेंशियलिज्म और भी बहुत अच्छी पेरिनियलिज्म अच्छी मार्क्सिज्म अच्छी एजुकेशनल मार्क्सिज्म ओके बट यही पांचटा ही हमर यूजीसी नेट में यही पांचटा ही इंपोर्टेंट हमर दरकार तापर ईच मॉड्यूल पई ईच क्वेश्चन जोड़ा हमें तार कि जोड़े प्रैक्टिस एमसीक्यू से गुडा हमें देखिबो बुझि परले सो फर्स्ट लेट अस कम टू एजुकेशन व्हाट इज एजुकेशन एटा मैम भी अपन को आगु पढै चंदी मु जस्ट कल ताको रिपीट कर दोची ओके डिराइव फ्रॉम कोको Latin terms to derive each. Okay, educare, educate, okay, how educate. So basic माने कौन ये सब terms रा to draw out or to nourish or to bring up. जनकर किछि गोटे क्वालिटीज अच्छी भगवान तांको innate qualities देखि पठेइ चंदी inherent qualities किछि तांकर अच्छी सेटा को आउरी केमती ओके बेटर करा ही परिबो ठीक अछि नरिश करा ही परिबो सो एज ए चाइल्ड समवन इज वेरी गुड इन सिंगिंग वॉइस ता बहुत भलो अछि ताले ताकू प्रॉपर नरिशमेंट प्रमोशन राइट डायरेक्शन देखेले आगु जाइंकी बहुत भलो सिंगर ते ही परिबो राइट सो एजुकेशन दैट इज बेसिकली एजुकेशन आमे जो भाबुचु कि केवल स्कूल जिबा कि पाठडा पढिबा सेटा एजुकेशन that is one of the parts of education but education the process ta mainly jo inherent au innate capabilities bhagwan हमको देई चंती ताकू आउरी केमती आपण बेटर करि परिबो okay so education is both a process and a product so eta gote process भी in the sense that then the process of education धरंतो आपण गोटे पिलाटे स्कूल रे पढिला ओके तो असाइनमेंट्स दिया होची करूची तापरे नेक्स्ट स्टेज को वाला फाइनली सो सेटा हला आपन को प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन कोन तो फाइनली लेट्स से 10 इयर्स पढला परे कि 12 इयर्स पढला परे पिलाटा बाहरला ओके एंड ही इज एन एसेट टू द सोसाइटी सो ही इज ए प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन राइट तो से जिंसटा हला प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन सो that is the difference between process and product so education ta kono seta gote process bi aru gote product bi बुझि परले so this is basically some of the basics that you should know about education तापरे टिके कोन कहबे academic definition भी गोड दिटा देखि देबा education रो definitions as such तो सेमती यूजीसी नेट रे पढिबार चांस नहीं किंतु हां ता ऊपर किछि आपनकर related questions indirectly पढ़ी पारे सो स्वामी विवेकानंद एजुकेशन को केमती डिफाइन कले मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन तामाने से कोन कहउचंती कि एजुकेशन ता आपण किछि नुवा जिंस पसि दउ नांती लोक भीतर भगवान ताको से क्वालिटी ता अगुरु देइचन आपण ताको आउरी रिफाइन करचन आउ ताको बेटर करचन बुझि परले सो मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन राइट सेटा स्वामी विवेकानंदଙ୍କର कहबार कथा so that perfection is already in man that is being manifested okay got a better way re taku apana nourish koruchanti so that auri labh hobo society ko right gandhi ji kon kahle gandhi ji ko कहबा कथा all round drawing out of best in child and man all round okay best in drawing out of the best in child and man तेणु खाली पाठ पढ़ाटा भल थी कि स्पोर्ट्स टा भल थी सेमती नहीं
जमती कि पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट तार हम आउ सोसाइटी को भी सेटा बेनिफिटेड हम ओके से जिनसटा से होछ तापरे नेक्स्ट हैला जॉन ड्यूई ओके सो तांकर सिंपल जिनस हैला एजुकेशन इज डेवलपमेंट ओके सो जदि गोटे लर्नर डेवलप करूची तार स्किल्स एबिलिटीज तो ताकू एजुकेशन हिसाब से कहउछन काना से प्रैग्मेटिस्ट थिले प्रैग्मेटिज्म संगे रिलेटेड थिले जोटा हम देखिबा आगु को ए क्लास रे ओके देन पेस्टोलॉजी सो पेस्टोलॉजी करो सही सेम जिंसो डेवलपमेंट ऊपर एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट तीनटा जिंसो कहले इट इज नेचुरल डेवलपमेंट ओके तापरे हार्मोनियस डेवलपमेंट मींस it has to be in symphony with the environment harmonious development and progressive development अल्प अल्प रे सेटा आस्ते 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 आगु को पडिबो ओके सो एमति नो हठात किनी सब यू नो एंटायर डेवलपमेंट ता हेजिबो नो इट हैपेंस इन स्टेप्स ठीक अछि सो इट इज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एगुडा हला एकेडमिक डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन तापर एजुकेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन सेमति तो बहुत अछि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किछटा देखि दबा एजुकेशन ता एमति नो कि 12th सरी गला ग्रेजुएशन सरी गला पोस्ट ग्रेजुएशन सरी गला पीएचडी सरी गला डीलिट सरी गला तो एजुकेशन सरी गला नो इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ओके इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आपण यदि मोड्स ऑफ एजुकेशन की फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन देखिबे ताको आपण नॉर्मली डिवाइड करछनी फॉर्मल इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन जोड़ा हमें आगु देखिबा फॉर्मल एजुकेशन जोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन आपण स्कूल जाउचंदी कॉलेज जाउचंदी यूनिवर्सिटी जाउचंदी सेठी गोटे फिक्स्ड करिकुलम अछि आ गोटे फिक्स्ड स्ट्रक्चर अछि गोटे फिक्स्ड पेस अछि एई सेमेस्टर रो पाठ 6 मास रे सरिबो तो आपण 3 मास रे भी आपण जदी गिफ्टेड थिबे 2 मास रे आपण सार देबे आपण जदी सेटा प्रॉब्लम होची यू आर ए स्लो लर्नर आपण पछरे पड़ जिबे 6 मास रे सरिबोनी आपण ओके और आपनकर सरनी बोली से 6 मास टू 8 मास से सब जिंस नै सो इट इज रिजिड इट इज अ फिक्स्ड तारो करिकुलम फिक्स्ड ओके तारो टाइमिंग फिक्स्ड सब फिक्स्ड आपनकर थिबो सो सेटा फॉर्मल एजुकेशन रो एग्जांपल देखो तारो ऑपोजिट हैला नॉन फॉर्मल एजुकेशन माने कोन तो सेठी टिके आपन टाइम टिके अधिका थिबो स्ट्रक्चर थिबो ओके सिलेबस थिबो सर्टिफिकेट भी मिलिबो बट सेटा शॉर्ट टर्म थाए टिके अधिका फ्लेक्सिबिलिटी थाए डिस्टेंस एजुकेशन हे गला ए सब जिंस आपनकर एथरे जीवो कोथरे नॉन फॉर्मल ओके फॉर्मल नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन को तो सेटा से रियल लाइफ एजुकेशन जोटा और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस नेचर टीचेस यू अ लॉट आपण देखुछनी नेचर रे एई जिंस होउची सेउथुर आपण बहुत सिखुछथि अच्छा एटा मते करबो नै ओके जेमती लास्ट क्लास में एग्जांपल देलु नेचुरलिज्म रे कोन को होउची कि टीचर रो से राइट नहीं पिला को पनिश करिवार नेचर ताको पनिश करिवो ओके जेमती कि से जाउची गोटे एंट ओके एंट को हर करचोनी से ताको भांगिया भी जाउची ठीक अछि आइडियलिस्ट टीचर कोन करियो ताको अटकेइबो बिकॉज़ ही इज एन अथॉरिटी आज पढिबा सेडा ही इज एन अथॉरिटी आइडियलिस्ट टीचर विल स्टॉप करनी सेमती आ तुमे जे गलो सेडा करिया पे मु मना करथिले करिया पे सेत पई तुमको पनिशमेंट मिलिबो ओके तो 10 थरो तुमे सिट अप्स करो राइट आइडियलिस्टिक टीचर से कहबो नेचुरलिस्टिक टीचर से बुझे देथियो बाबा से एंट रो घर को जाई कि तब तक टिके यू नो कोइडा मारिबनी हाथ पसेबनी वटेवर तो कॉलेज से ने कामुर देबो बहुत असुविधा ठीक अछि टेक्निकली सेटा भी नेचुरलिस्टिक टीचर को कहया कथा नु से जस्ट खाली एति कह गोटे डाउट अछि पतनी परिबन जति से जाई कि करूची पिलाटा तो ताको एंड्स कामुडे से कांदीबो तो से जानिला कि नहीं मते एंड्स को ये रे एटा छुइना कथा नु बुझ परले सो नेचुरलिज्म या होची कि नेचुरलिस्टिक टीचर से तर इंटरफेयर करिवे सेटा पढिबा हम सब ह कोन के पचरले डाउट आज्ञा सर ए जो क्वेश्चन आपण एबे मु आठी टिके लेट रे जॉइन कली तो ए जो आपण फर्स्ट डेफिनेशन कहिलेनी सब से गुडा को डायरेक्टली क्वेश्चंस पड़े कि हां हां हम क्वेश्चंस डिस्कस करिबा आज बहुत गुडे क्वेश्चंस अछि ओके जो नहीं 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 से जो ऊपर डेफिनेशंस गुडा आपण देलेनी कि ये कहितले ना से ना क्वेश्चंस ना गुडा को यूजीसी नेट रे टीचिंग एप्टीट्यूड रे प्राय पड़े
आगे ठीक है सर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेसी एथरे कॉन्सेप्ट ऊपर क्वेश्चंस बेसी आसे हम देखिबानी कोन क्वेश्चंस पडुची राइट सो सेटा हला फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन तापरे एजुकेशन ऑलवेज एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक माने कोन पूरा सबु एस्पेक्ट को खाली पाठ को नुह कि खाली स्पोर्ट्स को नुह सो मेंटल फिजिकल social and moral all the aspects will be covered or should be covered or ought to be covered by education okay mental aspect obviously roibo jonako critical thinking jonako reasoning kemti au better hobo physical roibo se kemti strong roibo strong au healthy roibo tale se society ko kichi okay bhalore contribute kar paribo तार social development हवा दरकार सी तो गोटे इंडिविजुअल सहित गोटे सोशल ऑर्गेनिज्म से ठीक अछि तो सी सोसाइटी संगे बंचिबो जदि तार सोशल ट्रेट्स रहिबोनी से एंटी सोशल की बाहरिबो ताले से असुविधा से गोटे यू नो गोटे सब आउटसाइड सोसाइटी गोटे रहिबो से ठीक अछि आउ बहुत इंपोर्टेंट है मोरल डेवलपमेंट बिकॉज विदाउट मोरालिटी जदि आपण एजुकेशन देबे ताले इट इज रेसिपी फॉर डिजास्टर ठीक अछि नो कि Osama bin Laden was a civil engineer ठीक अछि तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ऊपर तांकर नॉलेज थिला सेहि भाई से माने एमिति कैलकुलेट करले कि एई फ्लोर रे जदी फ्लाइट ता पसिबो ताले स्ट्रक्चरल डैमेज एते होबो कि से रीइंफोर्स स्टील रो बिल्डिंग सुडा भी गोटे पॉइंट पर से गुडा डिस्ट्रॉयड हे जिवो राइट बिकॉज़ मोरल एजुकेशन नथिला ताको सेटा बुझाई नथिला से जोडी भी पडथिला कि बाबा एजुकेशन जो तुमको दिया होची एटा वर्ल्ड रो भलो पई आ वर्ल्ड माने एथरे जत्ते लोक और जत्ते एनिमल्स अछंती समस्त को पई हैला तो मोरल एजुकेशन रो जदी फेलियर हबो ताले इट विल बी डिजास्टरस फॉर द सोसाइटी जेमते हमें देखु सबुटु हाईएस्ट पोजीशन रु नै कि सबुटु लोएस्ट पोजीशन रे जो लोक अछि समस्त करप्शन करिया पे रेडी काहे कि ना से मोरल एजुकेशन ता प्रॉपर्ली दिया है आमे मोरल एजुकेशन को काढी की मो टाइम रे एटलीस्ट हमर एलकेजी रु स्टैंडर्ड 8 मोरल साइंस रो गोटे सब्जेक्ट थिला गोटे क्लास थिला ठीक अछि आ बहुत पिला सेटा इंटरेस्टिंग भी लागे सेही क्लास ता काना जो हमर टीचर थिले बहुत भलो रे पढुतले सर एपे किंतु मो पिला को स्कूल ये रे मो मोरल एजुकेशन क्लास देखु जेटी पॉटरी अछि सेरामिक्स अछि कराटे अछि वोकेशन बहुत उडा ओके जेमती आपको जाय कि हमें सेतरा अर्न कर परियो दैट इज फाइन बट जो जिनसोटा बहुत इंपोर्टेंट सेटा को आपण छाड़ देलो okay so from idealistic moralistic society we are slowly moving to a hedonistic society hedonism माने कोन जानछन materialism blind materialism okay तो hedonistic लोक जे से किछि पाप पुण्य सेडा किछि बिलीव करेनी ठीक अछि गोटे लाइफ अछि एन्जॉय करो मैक्सिमम ठीक अछि सेतरे किछि भूल ठीक किछि नै ओके तो एनीवे आउ कोन एजुकेशन रो कैरेक्टरिस्टिक रहिला एटा डायनामिक एंड अडैप्टेबल एजुकेशन के स्टैटिक हे परिबन जा सोसाइटी रो रिक्वायरमेंट विथ द चेंज इन टाइम से हिसाब रे से अडैप्ट करिवो एंड इट इज डायनामिक ठीक अछि सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन तो जंती ओडे एबे जो एबे चली छी हमरो एनईपी परे जो सीबीएसई रो करिकुलम चेंज हला तो एबे कोन आगुरो हमर सब कोन थिला से मुगल्स माने कोन कले कोन न कले से माने कोन कोन सब अलगा प्रॉब्लम सब करथिले एबे नुवा एनसीईआरटी बोइले से गुडा इंसर्ट कराई जेमति कि गोटे पेज रे आपनकर अछि सेतरे से जो औरंगजेब जो डिक्टेटटा देइथिले कि जगन्नाथ मंदिर को भंगा जाऊ ओके तो पूरा तार फोटो सहित सेटा दिया हिच कहा को कुआ हैतिला को जनरल को कहिथिले तुमे कहा को पठेइबो ओके तो that is the thing तो पिला माने सेटा जान that is the truth ठीक है सो जो पर्यंत एजुकेशन ता हमर लेफ्टिस्ट का हाथ रे थिला कम्युनिस्ट कर ओके नेहरूवियन पीरियड टिल लेट्स से 2000 इवन वाजपेयी को पीरियड रे भी बहुत किछि तो बदली नथिला 2014 पर हमें कहि परिबा मेजर रेवोल्यूशन हिच तो सतकड़ा जणा पड़छ एबे ओके सत को बहुत जगह रे लुचा आइतिला but now that is not possible with social media and you know jodi bhi government chahibo audience band kar da it's very difficult people somehow will come to know
right? So education is dynamic, it is adaptable. Society रो requirement जहाँ से हिसाब रे जब मैं कहली vocational education in many schools has okay substituted that moral development. Vocational development टा बेसी हमारा दरकार होच in a competitive world से skills उड़ा बेसी अपन को required होची. Class 1-2 पिला को अपन coding सिखोचन जे ठीक रे निजरो ना भी कोई पारना कहीं ना आपको सेटा दरकार पड़े, right? So anyway, dynamic and adaptable सेटा रहबो एगुडा सब होला characteristics of education. तापर forms of education जोड़ा जस्ट मु कहली formal education it is structured, institutionalized and generally it is rigid. जेमति कि schools रही गला, colleges रही गला, universities रही गला सेठी गोटे particular curriculum अछि और एटा more or less uniform. You may be a gifted child, you may be a slow learner, you may be an average student, जहाँ भी हो समस्त को सब जिनस एक सेठी. ओके तेणु सेठी पर्सनलाइजेशन रो चांसेस बहुत कम. सो सेटा हला फॉर्मल एजुकेशन. नेक्स्ट तार ऑपोजिट हला नॉन फॉर्मल एजुकेशन जोटा कि शॉर्ट टर्म थाए वोकेशनल कोर्सेस. ओके जो अपन डिस्टेंस एजुकेशन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स एटा नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो फॉर्मल एजुकेशन तो टिके रिलैक्स्ड बट पूरा ओपन नुह सेटा सेथरे भी रिजिडिटी अछि, कोर्स अछि, सिलेबस अछि, सेही टाइम भीतर सारिबे. एति कथा आपण इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज रे एते बंधा हिना. ओके किछि बात मात्रा रे बंधा ही परंदी इग्नू हैला ठीक अछि. तो सेटे कोन आपण निजो घरे रहि कि प्रिपरेशन करछन बट टर्म असेसमेंट दोउछन, टर्म एग्जाम दोउछन. ओके सो रिलेटिवली सेटा टिके बेसी यू कैन से ओपन फ्लेक्सिबल as compared to formal education हैला. तापर आसिला इनफॉर्मल एजुकेशन जोटा कि कोनोसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओके स्ट्रक्चर रे आपन को दिया ही परिबो. सो दैट इज यू विल लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड नेचर एनवायरनमेंट रो आपन बहुत जिंसो सिखियो, राइट? सेटा हैला इनफॉर्मल एजुकेशन. सो दीज आर बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन. The questions कथा कहथिले. सो वी विल बी डिस्कसिंग अराउंड 30-40 क्वेश्चंस टुडे. तो फर्स्ट क्वेश्चन टा देखो, which of the following is a formal form of education? Watching documentaries, classroom, school classroom, social interaction or learning for future. So formal form of education it is school classroom hi rahibo. Okay, so formal education is institutionalized, structured and curriculum based. Okay, तो watching documentary सेटा भी गोटे टाइप रो एजुकेशन आपण सिखुचंती सेथरे बहुत गुडे जिंस जानुचंती नुवा जिंस. ओके तो सेटा कोथरे वाचिंग डॉक्यूमेंट्री आ वितर कोथरे जीवो? कैन यू टेल मी फॉर्मल एजुकेशन रे जीवो कि इनफॉर्मल रे जीवो कि नॉन फॉर्मल रे जीवो? नॉन फॉर्मल जीवो ना इनफॉर्मल रे जीवो? मते के इनफॉर्मल कोन से एजुकेशन डॉक्यूमेंट्री लर्निंग देखो इट डिपेंड्स. सपोज मते गोटे कुहा आइची मोर स्कूल रे कि एई डॉक्यूमेंट्री लिंक पठेइचंती टीचर ए डॉक्यूमेंट्रीटा आज देखि दबो काली मु क्वेश्चन पचारिबी तो सेटा पार्ट हे गला करिकुलम रो. सेही केस रे सेटा फॉर्मल एजुकेशन रे गला. ठीक अछि. मु मो इंटरेस्ट रे गोटे जिंसो देखुची से थ्रू मु बहुत गुडे जिंसो जानिया पे पाउची. ओके सो सपोज आई एम बेसिकली अ लॉयर, माय प्रोफेशन इज लॉ. ओके बट मु नेशनल ज्योग्राफिक रे देखुची कि हाउ द अर्थ इज फॉर्म ज्योग्राफी ऊपर किछि नॉलेज मु ओके सेटा मोर प्रोफेशन पे दरकार नै कि मते के कहि नांती करो सेटा. तो सेही जगह रे कोन आई एम लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट. ओके मते गोटे पर्टिकुलर जिंसटे दरकार अछि. ओके मु से थ्रू सिखुची सेटा. ओके तो एटा कार एग्जांपल हबो लर्निंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट्रीज वेयर इट हैज नॉट बीन नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स. जदि निजरो कोर्स रो पार्ट हे गला ताले सेटा फॉर्मल रे केबे केबे जाय पारे आउ नॉन फॉर्मल रे भी जाय पारे. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. ठीक अछि. आउ जदि नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग इट मे आल्सो बी इनफॉर्मल रे भी को केस रे जाय पारे. ओके सो सेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपन रहला. सो इन दिस स्कूल क्लासरूम विल बी ओके that is example of your formal form of education. तापरे components जदि हम देखिबा तो ऑलरेडी हमें तीनटा कंपोनेंट भी जनरली से दैट इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस. ठीक अछि. तो एजुकेशन प्रोसेस टा
आम देखिलु कि एजुकेशन इज बोथ ए प्रोसेस और आल्सो ए प्रोडक्ट तो एटा प्रोसेस कथा आम कहूँ ओके आउ भी दीटा आम ये देखुचु कंपोनेंट तो फर्स्ट तो है टीचर और द एजुकेटर ताको काम है टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स तापर जी ताको रिसीव करिवो दैट इज द लर्नर और द स्टूडेंट रिसीव्स एंड रेस्पॉन्स टू लर्निंग थर्ड है कंटेंट द सब्जेक्ट मैटर टू बी डिलीवर्ड ओके कौन पढ़ा टीचर कौन पढ़ेबे स्टूडेंट देन context okay context टा कौन ना environment in which that transfer of knowledge takes place okay सेटा हला context आउ fifth हला communication that is means and methods of instruction सेटा में teaching methodologies रे पढ़िबा ताको lecture method हे पारे discussion method हे पारे many other project method हे पारे lots of methods are there which you will study okay so these are the major components of education process ता भीतर सब components भी अछि जंतु आपण feedback ता रखिले हम क्लास से feedback ता डिस्कस करथिलु feedback is also a part of it okay तो पांचटा जिंस mainly components of the education process okay now हमें जो subject ता जो module ता हमें पढुछु that is basically teaching aptitude तो एई दीटा टर्म हमको बुझियो पय पडिबो टीचिंग कोन एप्टीट्यूड कोन तो प्रथमे टीचिंग के आसंतु टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज हैला तो नॉलेज भी दरकार स्किल्स भी दरकार आउ वैल्यू भी इम्पार्ट कराउ जो टीचर खाली नॉलेज इम्पार्ट करिवो स्किल इम्पार्ट करिवो वैल्यू को यू नो ताको स्किप कर देबे तो सेटा प्रॉब्लमेटिक इफ आई एम टीचिंग ए टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स मु जानि जे पिला माने आको जाई टीचर्स हेबे तो सेठी मते टीचर्स पे वैल्यू जहा दरकार सेटा मते कहया पड़िबो ओके सेथरे बहुत गुडे कटु सत्य भी मते कहया पे पड़िबो जोटा किछि पिला को भलो न लागि पारे बट वैल्यूज आर वेरी इंपोर्टेंट ठीक सेमती मु जदी लॉ पिला को पढौची ताले लॉ रे कोन कोन प्रॉब्लम्स अछि ओके जेतु आपण आगु को जाई कि जस्टिस पई फाइट करिवे कहारो जस्टिस पई नॉट द रिच एंड दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी बट द पुअर एंड द डाउन ट्रॉडन जार वॉइस नाही ता पई आपण लड़िवे तेणु से केते गुडे सत आपको जाना पड़े जोड़ा कि अप्रिय सत हो पारे ठीक अच्छे 20टा स्टूडेंट्स अच्छा मुझे जिन कहूँ जोड़ा दि तीन जन को खराब लगी पारे किंतु जेहेतु दि तीन जन को मोर स्टूडेंट्स को खराब लगे मु सत कथा कहबी जदि मुझे करुच्ची टीचर हिसाब से मोर से बहुत बड़ भूल हम सो वैल्यूज ऑल्सो इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक अच्छे give them the facts आपण facts दे देबे हैला then you can decide एटा ठीक कि भूल राइट टीचर तार ओपिनियन ता पके दबनी स्टूडेंट ऊपर किंतु एक्चुअल जिंसटा बतेबो सेटा हला टीचर रो बड़ काम these are the facts then you decide okay because we have been taught lot of things which are incorrect okay तापर जो कथाटा कहउतली एटा गोटे स्टैंडर्ड जिंस नुआ जो माने एबे पढुछ दिया पई से माने एटा टिके माइंड रे रखिबे दैट टीचिंग इज जनरली कंसीडर्ड एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस जनरली ओके तो तरे के रहले टीचर रहले स्टूडेंट रहले और तांको भितरे जो जिंसटा पढा हबो दैट इज कंटेंट सेटा रहला ओके तापर इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन प्लानिंग प्रेजेंटेशन इवैल्यूएशन तीनटा जिंस एतरे कवर हो टीचिंग रे सो फर्स्ट यू हैव टू प्लान व्हाट टू टीच कोन सब्जेक्ट्स पढाबो से सब्जेक्ट्स रो कोन मॉड्यूल्स पढाबो सिलेबस कोन केते समय रो सराबो सब जिंसडा आपण प्लानिंग कले तापर ताको प्रेजेंट कले पढैले पिला तापर इवैल्यूएट कले ई पिलाटा कोन बुझिला केते की बुझिला बुझि पालो तो सेटा हला टीचिंग डेफिनेशन अगेन एकेडमिक डेफिनेशन देखिले क्लार्क को कहया कथा कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग ओके जेमति कि गोटे पिला से लर्निंग आडू को जीवो ओके सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज द एम ऑफ टीचिंग ओके प्रूबाचर को कहिसेंती प्रूबाचर को कहया कथा टीचिंग इज एन आर्ट एंड ए साइंस इट्स बोथ गोटे आर्ट काहे कि ना फॉर एग्जांपल हिस्ट्री सब्जेक्ट तो ताकू पांचटा टीचर पढ़ेले ओके के जन को बहुत बोरिंग लगी पारे के जन को बहुत इंटरेस्टिंग लगी पारे इंटरेस्टिंग करी कि से सब्जेक्ट पढ़ाई
So that is an art. How to teach is an art. Okay, and at the same time it is a science also, because सेथरे आपनकर फैक्ट्स रहिबो. ओके, सेथरे आपनकर रैशनल रहिबो. एई जिंसटा मु पिला को काहे की पढेबो, ऑब्जेक्टिव टा कोन, एई ऑब्जेक्टिव टा ताकू दरकार, यू नो, इट इज इंक्लूडेड इन आवर हायर गोल की नाही. ताकू जा पढेली फैक्ट हिसाब रे पढायला. ओके, so it is both an art and science. That is what Brubacher said. और कौन कहते, और को कहया कथा, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज. ऑर्गेनाइज नॉलेज इज कॉल्ड विजडम. ठीक है, तो तार जो पूरा हायरार्की टा, फर्स्ट तो हैला रॉ, ओके, डेटा, रॉ डेटा को हमें ग्रुपिंग कले लॉजिकली सेटा आसी जिवो इंफॉर्मेशन को. ओके, इंफॉर्मेशन को अपना आउरी लॉजिकली ताको अरेंज कले सेटा आसी गला नॉलेज को आउरी अपना हायर स्टेज को नेले सेटा आसी जिवो विजडम को. बुझि परले. सो टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज. एई डेफिनेशन टा और दिचंती. अंडरस्टूड. सो क्वेश्चन 2 को नियंतु. Which of the following is not a component of education process? So educator to रहिबो, learner to रहिबो, content to रहिबो. So obviously odd man out is backward. एटा बहुत easy questions. ठीक अछि, जेतो हमें बेसिक क्लासेस क्लास 1 रे स्टार्ट करछु. ताबेटो वीकली टेस्ट करिका आपण देबे. ओके, काली अछि बोते वीकली टेस्ट आपण पर दिन अछि थर्सडे. ओके, तो तारो पैटर्न कोन, you know that UGC नेट परीक्षा ले केमती होछि. That is basically computers. Okay, तो ऑनलाइन, तो आपन को परीक्षा भी ऑनलाइन हो, ऐप रे आपन देबे. ठीक अछि, ऐप रे देई सरीबे. You will be given 1 hour to give the test. 10 टा रो 11 टा एंड 11 टा रो 12 टा तार डिस्कशन हो, जा जति क्वेश्चन दिया. बुझ परले, सेटा हला आपन को पैटर्न. सेटा ऐप थ्रू ही आपन देखो करिवे. तो सेही थरे जो क्वेश्चन जोड़ा दिया हो से गुडा हला एक्चुअल यूजीसी नेट. आस्ते आस्ते मतलब आगु जिबा सेथरे अपन देखिबे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन. एगुडा आपनकर बेसिक्स गुडा क्लियर करिया पे क्वेश्चन ता जेतो एटा जी फर्स्ट क्लास. लास्ट क्लास ता इट वाज जस्ट लाइक ए इंट्रोडक्शन, कोन मु पढेबी कोन करिबी से गुडा मु कहथि. ओके, सो आंसर इज ब्लैकबोर्ड. ब्लैकबोर्ड इज a tool or an aid. Okay, not a fundamental component of education process. तो टीचिंग बुझ परले कोन. एबे आसुन तो एप्टीट्यूड, कना पेपर रो नाम रहला टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट. So now you come to aptitude. What is aptitude? So aptitude हला एटा जिंस गोटे मन रखिबे बहुत. Aptitude is basically, okay, inherent, सेही वर्ड टा को अंडरलाइन करिवे, और जोटा आपन को भीतर ऑलरेडी अछि. Natural ability to learn or do something. Natural ability बना ही नहीं सेटा. Okay, acquired ability नहीं. It reflects potential rather than acquired knowledge. So it can be specific like numerical aptitude or general aptitude. Okay, so a person's natural ability which God has gifted you, which nature has gifted you to do or learn something. Some people are naturally good sketchers. Okay, भलरे drawing करिवे, बढ़िया sketch करिवे, color करिवे. Some people find it very hard to draw a straight line also. कुछ भी हो जाए. So aptitude रे हम definition देखिबा तो फ्री मैन को कहबा कथा a combination of characteristics indicative of an individual's capacity. Okay, तो capacity बढ़े भी होबो आपको जाई. तापरे थॉर्नडाइक को कहिसेंती predictive potential of future performance. Okay, आगु को ये केमती परफॉर्म कर परिबे आंकर. ओके, गोटे जनकर एप्टीट्यूड जदी अछि गोटे पर्टिकुलर जिंस पई माने ताको पोटेंशियल टा हाई, से जिंस रे से सक्सेस पाइबे बोल. ओके, एंड क्रॉनबैच करो definition कोन, readiness to acquire proficiency in a given area, right. तो एबे टीचिंग जानले, एप्टीट्यूड जानले, मिसे दियो तो टीचिंग एप्टीट्यूड कोन. ओके, it is the natural ability or potential to teach effective. The natural word ता important. अवश्य जहांकर नेचुरल एबिलिटी थिबो ताकू आउरी बेटर करा हबो. सपोज जनकर नेचुरल एबिलिटी नाही, से अलगा कोनोसी जिंस पई टीचिंग रे आछन. ओके, सेत पे अपन देखिबे जेतेबेले
बड़ बड़ पोस्ट पई आपण को रिक्रूटमेंट हुए तो से माने कोन ना आपण को से जो बोर्ड जे सिलेक्शन बोर्ड से कहती आपण 15 मिनिट की आधा घंटा लेक्चर नियंतु ओके जो ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो जो सब बारे स्कूल ब्रांच रो थिला जो लास्ट टाइम जेतळे हितला ओके किंबा जदी यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल रे आपण इंटरव्यू को जाउछथि से माने कहबे आपण हाफ एन आवर पढांतु देन दे लास्ट यू क्वेश्चन ऑन ओके मैडम लास्ट क्लास रे कहउतले ना कि it is not necessary for a good student to be a good teacher and vice versa okay तेणु कौन से एप्टीट्यूड टा थिबा दरकार पढ़ेबार इंटरेस्ट थिबा दरकार जस्ट बिकॉज समवन इज ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी से बहुत भलो टीचर हबो सेटा मे नॉट बी सो ओके आउ ऑन द अदर हैंड समवन इज ए वेरी एवरेज स्टूडेंट बट ही लाइक्स टू टीच इनहेरेंटली से क्वालिटी टा ताकर अछि से जो जिनसडा जण को बुझौचंती जो स्टाइल रे बुझौचंती जणे आराम रे बुझौछ राइट से इंग्लिश भलो रे न कहि पारंती से अलगा ताकर इश्यूज हे पारे बट टीचिंग एप्टीट्यूड ताकर बहुत भलो अछि राइट सो इट इज द नेचुरल एबिलिटी और पोटेंशियल टू टीच इफेक्टिवली ओके खाली टीच नो टीच इफेक्टिवली माने सामना वाला जे लर्नर से सेटा बुझिबार अछि इन्वॉल्व्स क्लासरूम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स understanding learners so you are in a class which is generally a mixed class se thare gifted children भी अछंती थरिए कहले से पूरा बुझी जिवे एवरेज पिला अछंती जो को टिके एग्जांपल देखि बुझिया पड़ियो आउ लैगार्ड्स भी अछंती ओके स्लो लर्नर्स हमें सेमती कहि परिबा जेमती तांको टिके अधिका टाइम लागियो नाउ इन ए फॉर्मल सेटअप टीचर इज कंस्ट्रेन्ड कहीं तो कहते भाई 30 क्लास रे सारिबो फर्स्ट क्लास रे एटा पढेबो सेकंड क्लास रे एटा पढेबो थर्ड क्लास रे एटा पढेबो सी जदी देखुतंती स्लो लर्नर्स अछंती जो माने बुझी पाउनांती किबा आउ कि एवरेज पिला भी अछंती तांको टाइम दरकार ताले कोन वी हैव द प्रॉक्टोरल सिस्टम ट्यूटोरियल क्लासेस पर तांको दिया हुए ओके आगुरु सेटा स्कूल रे ही दिया होतला राइट व्हेन आवर पेरेंट्स वर स्टडीइंग तो एते कोचिंग सेंटर रो किछि व्यवस्था नथिला से ट्यूटोरियल क्लासेस प्रॉक्टर जने थिले तो सेटा इवन बड़ बड़ यूनिवर्सिटीज रे भी सेम जिंस थिला एबे भी अछि आईआईटीज एंड सम यूनिवर्सिटीज रे बट सेतबे बहुत इफेक्टिव थिला तेणु दरकारी पड़नटला कि जने के ट्यूशन जीवो कि बाहर कोचिंग जीवन व्हाटएवर जे बुझी पारलानी ताले से परे क्लास टाइम परे रहइबो तारो रिमेडियल क्लासेस करिका रहइबो आ रिमेडियल क्लासेस माने जे भलो रे बुझिबो रिमेडियल क्लासेस माने एमति नो कि लाइक परे रिमेडियल क्लास तो करार अछि सो दैट पेरेंट्स ऐसे कंप्लेन करिवेन आमे कहि दे परिबो कि एबे जेमति मोस्ट स्कूल्स रे होछि दे चार्ज वेरी हाई फीस तापर से पुनी रिमेडियल क्लासेस रखि देबे सेतरे कहबे कि तो पिला आसलानी कि आमे तो पढेलो रिमेडियल क्लास ओके जस्ट टू शिफ्ट द रिस्पांसिबिलिटी से सिंस से टाइम रे नथिला राइट इन्वॉल्व्स क्लासरूम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स से किए जल्दी पढिबो किए टिके लेट टाइम टिके तक अधिका एग्जांपल्स दरकार राइट टीचर जदी से फर्स्ट बेंचर जे सब बेले ओके आइदर घोसु की बुझू जा भी करू राइट तो जदी क्लास टा आपनकर पूरा टीचर एया देखि कि चलिबो कि से चतुर रामलिंगम भलिया यू नो जदी स्टूडेंट से आपण बुझिले कांसेप्ट टा यस सर कोन बुझिले कहले पूरा डेफिनेशन कहि दो बा ता माने पूरा क्लास बुझियाला राइट सेमिति जदी पढेबे ताले ऑब्वियसली सेटा इफेक्टिव टीचिंग केबे भी हे परिबन काहे ना अधा पिला तो बुझी ना सेटा ओके आउ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप टा स्पेशली फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस रे से टाइप रो थाए कि जे बैक बेंचर थिबो सी टिके माइंड रे रखिबो पछरी एटा सर पिला माने हसिबे ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर बुझी पाले तो सी आउ सेटा पछारिबोनी ऑल द से बुझी पारनी जिंस तो जार टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी से जिनस बाहर करे बाबा तुम लास्ट बेंचर जी से भी बुझु एक्सपीरियंस टीचर जी थी कि जार इनहेरेंट टीचिंग क्वालिटी थी से थरे आखि तकर देखिले स्टूडेंट रो जानि जीवो ये बुझिला कि बुझला ओके बट द थिंग इज दैट इवन इफ यू अंडरस्टैंड्स फॉर्मल स्ट्रक्चर्स रे स्कूल्स रे यूनिवर्सिटीज रे कॉलेजेस रे सेटा टिके डिफिकल्ट हबो ता पई काहे कि ना ताकू पर्टिकुलर टाइम दिया है एतिक टाइप रे आपण कोर्स टा सारी
ओके तो सेट बाय नाउएडेज होम स्कूलिंग रो कांसेप्ट बढ़िलानी ओके इंडिया रे यू विल नॉट बिलीव जो बहुत बड़ बड़ अचीवर्स दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल तांको पेरेंट्स माने जानी सुनी कि स्कूल रे पठे नांती यू ऑल नो अबाउट आवर चेस चैंपियन गुकेश ओके तो तांको पेरेंट्स कहना स्कूल गले पुणी से प्रैक्टिस केमती करिवो चेस रो तो से स्कूल ताकू पठेले होम स्कूलिंग जति के पार गले ही इज एन एक्सपर्ट इन चेस तेणु सेमती जे टेनिस खेलला जे टेबल टेनिस खेलला जे हॉकी खेलला सेही कांसेप्ट रहले बाकी ताले तमने कोन से पाठ पढ़ने जाननी से बहुत किछि जानछथि भाव दे आर एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू यूट्यूब दे आर एक्वायरिंग नॉलेज टू अदर मीडियम बुझि पाले तो an essential component of teachers eligibility and effectiveness teaching aptitude सेत पई जेते आपनकर मिड लेवल टीचिंग जॉब्स हो कि हायर लेवल यूनिवर्सिटी टीचिंग जॉब्स हो teaching aptitude is very very important so that is why it is very important to learn or to know teaching aptitude it ensures quality teaching and learning outcomes helps in identifying effective teachers vital for teacher training and recruitment evaluated in amara the NTA UGC net to hochi CTET OTET okay jete teacher entrance karika hochi sabu thare apan teaching aptitude ta paibe okay next question dekhantu question 3 a 0 which of the following best describes teaching aptitude interest in teaching training in teaching natural ability to teach or experience in teaching you see एटा टिके टिके एबे गला हमरो एग्जाम लेवल रे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देछ मु कोन कहली कि त इंटरेस्ट दिबा कथा पढे अबे तो ए विल बी द आंसर नो टीचिंग एप्टीट्यूड ओके नेचुरल एबिलिटी तांकर अछि कि इंटरेस्ट इज वन थिंग जनकर इंटरेस्ट हे पारे बट नेचुरल एबिलिटी ता अछि सो दैट इज द आंसर सी दैट नेचुरल एबिलिटी टू टीच टीचिंग एप्टीट्यूड इज एन innate माने which God has given you. It is not acquired. It has been gifted to you by nature or God. Or natural potential to teach effectively. Natural potential, not acquired skill. बुझी पारले तो टीचर को ट्रेनिंग देला परे तो स्किल एक्वायर करिगला से पढ़ाई परिबे ओके बट जहांकर से इनेट पोटेंशियल टा अछि ऑब्वियसली से माने बेसी इफेक्टिव हेबे तो सी विल बी द आंसर इन दिस केस okay next we will start with ajiro class ro jota most important part that is different educational philosophies hela semiti to 14 15 टा अछि एटा हमें बहुत भलो रे पढु कोत पई जोगुडा हमर ओईएस स्कूल ब्रांच ओके तांकर सिलेबस रे गोटा बहुत इंपोर्टेंट काहे तांकर गोटे पूरा सिलेबस गोटे पूरा अछि एजुकेशनल फिलोसॉफीज यूजीसी नेट रे टॉप 5 टा पढि देले चलिबो जोटा कि आइडियलिज्म नेचुरलिज्म pragmatism realism और existentialism आउ भी बहुत अच्छी essentialism perennialism marxism lot of other things are also there टिके differences तार अच्छी पर सेगुडा एते हमर दरकार नै हमको एही पांचटा पढिबार अछि तो कोन हमें पढिबा फर्स्ट तो हला सी आपको जतले डिटेल्स रे पढा हुए स्पेशली से जो ओईएस कथा कहूची हमें एक्सियोलॉजी पढू ठीक अछि मेटाफिजिक्स पढू मींस मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म ओके तो एठी हमर एस्थेटिक्स ऑफ आइडियलिज्म मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म से सब जिंस हम पढू एठी यूजीसी रेट पे सेटा दरकार नै एठी बेसिक जिंस पढिबा हमें तार क्वालिटीज कोन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन तार एडवांटेज कोन तार डिसएडवांटेज कोन दीटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज स्टूडेंट रो रोल कोन टीचर रो रोल कोन ओके आउ सिलेबस और करिकुलम ता केमती हबो सेही पर्टिकुलर एजुकेशनल फिलोसॉफी अंडर आउ the people who are associated the protagonist माने सेटा किए प्रपोज करथिले को लोक बेसी इन्वॉल्व सेतरे तो तांको नाटा टिके मन रखिया पे पड़िबो ओके बुझि पारले so I'll just take a break for 5 minutes you can just go through it ए जो मोर स्लाइड्स उडा आ मो अलगा फैकल्टीज के कहि छी तांका प्रेजेंटेशन उडा जेमती से माने पीडीएफ करी कि मते पठे देबे तो मु अपलोड कर देबी आपनकर ऐप रे तो आपण रेडीमेड मटेरियल टा रेफरेंस में रहइबो ठीक अछि तो इट इज इजी अपन से पढिया कथा ताको देखि पढ पारे ओके सो जस्ट टेक अब जे डाउट अछि कीप योर डाउट हैंडी आई विल रिज्यूम आफ्टर 5 मिनट्स सो यू कैन आस्क मी तो आज हमें एही पांचटी एजुकेशनल फिलोसॉफी कंप्लीट करिबा
आउ तारो एमसीक्यूज किछटा देखिबा ओके तो विल जस्ट टेक ए ब्रेक फॉर 5 minutes
Okay, so let us continue then. Educational philosophies माने कौन सेटा आगे बुझन. Okay, आपण को एजुकेशनल फिलोसॉफी को नहीं कि पिला को पढ़ेबे से हिसाब रे आपणकर फोकस ऑन करिकुलम को टाइप रो प्रोसेस आपनको स्कूल रे चलिबो ऑल दीस थिंग्स विल बी डिटरमाइंड. बुझ पले. सो सपोज गोटे आइडियलिस्टिक स्कूल अछि जेमति कि एग्जांपल हैला ट्रेडिशनल स्कूल्स गुरुकुल सिस्टम हमर दे. तो हमरो वैदिक कांसेप्ट रे कोन द टीचर इज एवरीथिंग. ओके हमें बहुत एग्जांपल्स देखिछु जोटी से जहा गुरु कहउछथि पिला से या ताको मानिया पई केते टाइम रे निज लाइफ दे दिछन. राइट. So that is an idealistic education where it is teacher centric. Teacher is an authority. से डिसाइड करिवो पिलार कोनटा भलो कोनटा खराब. पिला कहबो पिला सेटा फॉलो करिवो. ओके आइडियलिज्म सेटा पुराना कालिया जेते आपनकर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स रे ओके आइडियलिस्टिक टीचिंग किबा आइडियलिस्टिक टीचर किबा आइडियलिस्टिक स्कूल आपण पाइछिबे. तापरे आपनकर आसीला नेचुरलिज्म जोटा कहउछि कि नेचर हला सबटु बड़ टीचर. और जे टीचर हमें कहउछु सी खाली गोटे फैसिलिटेट करिया कथा. सी डायरेक्टली प्रोसेस रे इंटरवीन करिया कथा न. पिला को बतै देबे तापरे चुपे की रहबे. नेचर विल टीच. ओके pragmatism as the name suggests सेटा more towards practicality. Actually life रे दरकार कोन. Okay, so those things we will see. So a different philosophies ro curriculum alga rahibo, the role of students of teachers alga rahibo, evaluation pattern alga rahibo. तो हमें तार किछि एग्जांपल्स भी देखिबा. In phases we will see that. First जिंस हमें देखिबा ए सबुर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन, एडवांटेजेस कोन, डिसएडवांटेजेस कोन, को लोक आ संगे रिलेटेड अछन. ता ऊपर क्वेश्चन आसीबा. ओके तो फर्स्ट आइडियलिज्म को आसो. Characteristics of idealism. So it believes in ideas, minds and spirits as reality. Okay. So idealism no gote concept kono. It believes in perfectionism. There is a perfect teacher. There is a perfect student. सबु टीचर्स मानक परफेक्ट टीचर भलिया हवा पई चेष्टा करिया पई पड़िबो. सबु स्टूडेंट्स मानक परफेक्ट स्टूडेंट भलिया चेष्टा करिया पई पड़िबो. ता भलिया हवा पई सबु स्कूल्स को गोटे परफेक्ट स्कूल ओके भलिया हवा पई चेष्टा करिया पड़िबो. तो से परफेक्शन को देखेगी ओके एवरीवन हैज टू बेसिकली जेते से परफेक्शन पाखु को आपण जाय पारे. तापर फोकस ऑन मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. बेसी फोकस तार मोरल डेवलपमेंट आउ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऊपर कौन से पाठ पढ़ुची ओके तार ब्रेन टा केते डेवलप होची, इंटेलेक्ट टा केते डेवलप होची. एंड टीचर इज अ रोल मॉडल एंड अथॉरिटी. सो स्टूडेंट्स ओवर टीचर को देखिबे कि मो टीचर या करछन तो मते भी सेया करया କଥା. सो इज अ रोल मॉडल एंड अथॉरिटी इन आइडियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम. बुझ पाले. So these are the basic characteristics. सेमती characteristics देखला तो 10-15टा बाहरी. Like about punishment, what does it tell about punishment? So आपण को अगला टीचर हैला अथॉरिटी. तो टीचर को राइट अछि पनिश कर परिबे से पिला. ओके आइडियलिस्टिक आपण को सिस्टम रे राइट. तो प्रोपोनेंट्स किए तार प्लेटो थिले. एजुकेशन फॉर जस्टिस एंड वर्च्यू ताका कांसेप्ट से थिला. तापरे इंडिया रो देखिले स्वामी विवेकानंद. हिज एम्फासिस वाज ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ. ओके तापरे हेचल एजुकेशन टू रियलाइज सेल्फ एंड एब्सोल्यूट माइंड. राइट. तो ए माने सब प्रोपोनेंट्स थिले मेजर पीपल एसोसिएटेड विद द आइडियलिस्टिक स्कूल. राइट. तार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जदि हमें देखिबा so it emphasizes on values and ethics. सेटा बहुत important. As I told you, valueless education or education without ethics जदि सेटा करा हबो so you will be basically producing terrorists. Okay,
कहना ताको पाके नॉलेज अछि कोन केमती करा जीवो किंतु सेम एक्सप्लोसिव सेम टीएनटी टा आपण पहाड़ को फटेकी सेठी रास्ता बनै परिबे सो दैट जो माने दूर दूर रे रहउचंदी पहाड़ ऊपर रहउचंदी सेमानकु सुविधा हो इट विल हेल्प मैनकाइंड सेम एक्सप्लोसिव की नहीं कि अपन लोगों को मारी भी पारे ठीक है तो तेणु से एक्सप्लोसिव रो भूल किछि नहीं से भूलटा हला से एक्सप्लोसिव को यूज किए केमती करे तेणु जदि आपण वैल्यूलेस और एजुकेशन विदाउट वैल्यूज देले सो दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर ठीक है तो जो जो सोसाइटीज रे देखंतु एजुकेशन फ्री एक्सेस थिला किंतु वैल्यू बेस्ड नथिला सेठी सेही सोसाइटीज रे आगु जाई कोन है so it also promotes intellectual discipline okay intellectual discipline माने कोन पढिबे केमती पढिबे okay so that the teacher will tell you अपन गोटे फिक्स सिलेबस थिबो सेही हिसाब रे अपन जिबार अछि so intellectual discipline will be there एमती ना कि जा इच्छा सब पढ देबी को सब्जेक्ट ऊपर गुरुत्व देबे जोटा हमें आगु टिके पढिबा जाई कि करिकुलम ओके negatives कौन तारो कि disadvantage कौन it neglects practical and physical aspects not much okay सेमती भी नो कि totally neglect कर दिया but बेसी फोकस तारो थे intellectual and value based development ऊपर ता माने या नो कि physical aspect को पूरा zero कर देते and it is too abstract for early learners छोटो पिला जे से ये idealistic situation उडा बुझी परिबेनी concept उडा बुझी परिबे too abstract for early learners okay example आपण moral education classes moral science class करके देखिलु emphasis on literature philosophy and discussions teacher led discussion lecture based classroom teacher led जोटा हमें देखिलु last class रे देखिलु ना गोटे phrase लिखा हितला talk and chalk method तो एथरे जनरली टीचर कहिबे पिला माने सुनिबे आ ताको इनवाइट करिवे सो इट इज लेड बाय द टीचर इधर स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन बेसी न था कि टोटली न थे ओके सो इट इज बेसिकली टीचर सेंट्रिक एंड लेक्चर बेस्ड क्लासरूम तो लेक्चर हम आप बुझे तापर मे बी कौन डाउट शोट पचार पारती व्हाटएवर बट इट इज बेसिकली मोर और लेस यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स तापर जदि आपण फीडबैक करिका लगेबे सेतरे ओके ताले किछटा यू नो टीचर भी जानि परिबे कि पिला पढला कि नहीं कि बुझिला कि नहीं but more or less it is teacher centric it is teacher led lecture based classrooms okay idealism so सेटा हला हमें कौन देखिलु बेसिकली एतरे तार characteristics proponents advantage disadvantage और examples okay तापरे सेही ए राउंड ता सरला परे then also we will see आरो actual application कोठी कोन होची आंकर सिलेबस को करिकुलम केमतिया आंकर रोल ऑफ टीचर कोन आंकर रोल ऑफ स्टूडेंट कोन next asantu naturalism so as the name suggests naturalism ro concept kono na moniso kiछि पढेबनी कि पढेई पारिबनी पिला को नेचर पढेबो आउ पिला निजो पेस रे के जण जल्दी सेटा सिखिबे के जण देरी रे सिखिबे किंतु पिला डिफरेंट पिलांगर डिफरेंट पेस थिबो पिला ता निजो पेस रे से पढी परिबो ओके ताको एमति रे कि 3 मास रे सार दियो से मे बी बहुत ब्रिलियंट जो 15 दिन रे सार दबो किसे टिके ताको लेट लागि 6 मास लागि पारे 8 मास लागि पारे जेति की लागु से सबु पिला ओके दैट टाइम यू विल बी गिविंग टू देम कुछ पहले नेचर पढेबो तब नेचर विल टीच देम ओके नॉट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन और टीचर रो ताले काम कोन दैट वी विल सी से फैसिलिटेशन करिवे फैसिलिटेट करिवे पिलाटा को पढेबो emphasizes nature and child centered learning तारो जा इच्छाडा learning through experience and environment okay तो पिला बाहर जाएंगी क्लासरूम सुडा ओपन थिबो सेही टाइप रो आपण कहि परिबे it rejects rigid structure in education 6 मास रे सार दियो कोर्स तक ओके गोटे पिला को वर्ष लागि पारे 2 वर्ष लागि पारे सेम जिंसटा सितार निजो पेस रे एन्जॉय करी कि बुझिला आउ केटा पिला सेटा मास रे सार देबे तो मास रे सारुची से ता स्पीड रे पढिबो जाको 2 वर्ष लागु से ता स्पीड रे पढिबो सो इट रिजेक्ट्स एनी काइंड ऑफ a rigid structure in education जोडी कि एई टाइम भीतर ए आया कर दियो ओके नेक्स्ट हला तार प्रोपोनेंट्स के थिले रूजो सो एजुकेशन शुड फॉलो नेचर तांकर कांसेप्ट से थिला देन हार्बर्ट स्पेंसर
साइंटिफिक एंड एवोल्यूशनरी बेसिस आउ इंडिया रु कहले हमरो ओके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर सो जंती आपण विश्व भारती यूनिवर्सिटी रे देखिबे तांकर आज पर्यंत भी आ ऊपर बहुत फोकस थाए कि दैट लर्निंग हैपेंस इन नेचुरल सेटिंग ओके आपण फॉर एग्जांपल गीत शिखुछथि तो आपण गोटे एमती राग आपण ओके शिखा होची व्हिच इज रिलेटेड टू मॉनसून एटा मॉनसून रो सीजन अछि तो गोटे आपण ऊपर हेड कवर्ड गोटे टेंट गोटे रखले जोटी 10टा पिला से और तांको टीचर सेपटे बाहर वर्षा होची से माने ओदा होना टेंट की कोथरे अछंती बट गोटे नेचुरल सेटिंग रे से जिंसटा पढाला तेनु सेटा बेटर पढा ही परिबो रादर देन गोटे एसी रूम रे बसी कि आपण भाबुथिबे वर्षा हेले राइट सो नेचुरल सेटिंग रे केमती पढाबो सेटा हला तार कांसेप्ट तार एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए तो एडवांटेज कोन पिला निजो पेस रे पढला ओके और से जहां सिखिला बहुत प्रॉपरली सिखिला so it encourages creativity and self expression individual pace of learning जोरा हम कहली कहा को 2 वर्ष लागिवो कहा को 15 दिन लागिवो ओके डिसएडवांटेज कोन हरो लैक ऑफ स्ट्रक्चर में हिंडर एकेडमिक डेवलपमेंट अच्छा से पिला को 6 मास रे कोर्सटा सारिबार थिला त 2 वर्ष लगे देला ता माने कोन फाइनली जेतो बेले से सब कोर्स सारिबो तो ताको बहुत टाइम लागि जिवो इट विल हिंडर हिज एकेडमिक डेवलपमेंट ता सांग माने नेक्स्ट क्लास वेतरे जिबे ताकर जहा बयस थिबो आरो बयस बहुत अधिक हो जेतिबो सेतर तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर में हिंडर एकेडमिक डेवलपमेंट एंड इट आल्सो ओवरलुक्स मोरल एंड सोशल एजुकेशन इनफैक्ट रूसो जो सब ताकर एक्सपेरिमेंट करथिले सेतरे कोन से को ताको स्कूल जो नेचुरलिस्टिक स्कूल रा जो पहाड़ रे हेतिबो ओके पिला माने सेठी पढिबे नेचर रो लैब रे पढिबे दोस काइंड ऑफ थिंग्स ओके एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम सेमती नु रियल लाइफ प्रॉब्लम केमती सॉल्व करिवो से पिला सो आ तापरे सोशल आ मोरल पॉइंट ऑफ व्यू ता टोटली नथिला तो इट ओवरलुक्स मोरल एंड सोशल एजुकेशन ओके एग्जांपल लाइक द मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम लर्निंग बाय डूइंग इन ओपन एनवायरनमेंट्स लर्निंग बाय डूइंग माने कोन थ्योरी पढावेनी पिला पिला तो बेसिक्स को आइजिवो ए करियार अछि तापर तांको टास्क दिया चलो तुम बाहर ही जिनसटा कर तो से करेंगे ठीक भूल हम कौन हम तापर पुणी ट्राई करेंगे सो दे विल लर्न बाय एक्चुअली डूइंग इट लर्निंग बाय डूइंग इन ओपन एनवायरनमेंट एंड मिनिमल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जोटा मुझे कहली कि जदि आपण पढ़ई कि गोटे देख गोटे एनिमल्स कर जो से रोचंती कि जो इनसेक्ट्स माने जो जगह घर कर सेठी तुम जाकि गोड़ हाथ पसैया कथा नुह ओके पिला को आपण बुझे देले बस सेति मिनिमल डायरेक्ट इंटरेक्शन देन यू टेक देम टू द एनवायरनमेंट तो से प्लेग्राउंड रे जाकि खेलुचंती कि नेचर रो लैब रे खेलुचंती सेठी से देखुचंती गोटे बिरुडी बसा हिची गोटे गोटे एंट कर ओके तांकर घर हिची तो पिला तो इनक्विजिटिव से जाकि सेठी गोड़ पोक कला कि तार हाथ पसै देला तो पिंपुड़ी की बिरुडी तो कामुड़ देबे से कांदिबो बहुत राइट टीचर जदि से देखो दिस मिनिमल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्टॉप करे दबन तब ओके बिकॉज नेचुरलिज्म रे कांसेप्ट हैला कि नेचर पनिश करिवो टीचर रो पनिश करिवार अथॉरिटी नाही सेटा आइडियलिज्म रे थिला ओके आइडियलिस्ट टीचर कैन पनिश बिकॉज ही इज द अथॉरिटी एंड ही इज द यू नो एवरीथिंग फॉर द स्टूडेंट इन द सेंस दैट सी पिलार पूरा भलोटा देखिबो ओके तो सेथरे ताको पाड़ेबा भी ओके अछि ताको अथॉरिटी बट नेचुरलिस्ट टीचर विल अलाउ नेचर टू गिव द पनिशमेंट सी निजे पनिश करिवे तो ता पनिशमेंट कौन है से पिलार तार आंगुठी की कामुड़ देले बिरुडी की एंड्स करिका से लाइफ लॉन्ग मन रखिबो से केबे करिवो से जिंसटा बुझि पले सो मिनिमल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नेचर विल इंस्ट्रक्ट आउ जदि आपण नेचर रो कथाटा न मानिबे पनिशमेंट इन नेचुरल वे आपण को मिल जो राइट तो एटा गला नेचुरलिज्म थर्ड हैला प्रैग्मेटिज्म माने कोन एक्चुअल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो जिंसटा okay so characteristics कौन truth is tested by practical consequence actually जो जिनसटा हबो सेटा माइंड रे रखिवार अछि that is important not the theoretical concepts okay education should be useful and problem solving so problem solving skills आपनकर लास्ट क्लास जो हम देखथिले एप्लीकेशन लेवल सेही एप्लीकेशन लेवल माने प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल रे सब लर्नर्स मानको आसीबार अछि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जदि से माने सॉल्व कर पाउचंती
ताले आपण कहिबे दैट प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन इज अ गुड वन ठीक अछि काइना से रियल लाइफ प्रॉब्लम टाको एक्चुअल प्रॉब्लम जो लाइफ रे फेस हेछि सेटा से सॉल्व कर दो ओके सो लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन राइट सो they will also learn by doing things ଆଉ experiment କରିକି ତାଙ୍କର experience ଟା ବଢେଇବେ ସେଟା ହେଲା pragmatism ର characteristics proponents କିଏ ଥିଲେ Dewey okay education as a tool for social reforms William James ତାଙ୍କ ହିସାବରେ learning through experience ଆଉ okay Kilpatrick जोटा कि project method methods रे पढ़िबार project method okay जेमति कि हम स्कूल रे भी नहीं कि project method आपन को आबो बैंकिंग सिस्टम रे इंटरेस्ट केमती साने चार्ज करछन जाओ बैंक को विजिट करंतु गोटे प्रोजेक्ट करंतु ए थिबो प्रोजेक्ट रे सो यू विल गो टू द बैंक एंड यू विल यू नो गोटे आपण प्रोजेक्ट कले सेतर आपण केते एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कल सो प्रोजेक्ट मेथड सिमिलरली मेनी सच टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर तर आर एडवांटेज और डिसएडवांटेज कोन प्रैग्मेटिज्म सो इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन जो हमें कहू ना जुगाड़ राइट से जुगाड़टा बहुत दरकार प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करिया पे काना बही रे जा लिखा हिची बट एक्चुअली रियल लाइफ रे बहुत टाइम रे हुएनी ओके से जो जुगाड़ लगाय पड़े तो सेटा हैला इनोवेशन हम कहू ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन दरकार पड़ले बाटो बाहरी राइट सो इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन तापर रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज राइट आपण जोटा पढिले थ्योरी रे बही रे ताकू प्रैक्टिकल रे केमती अप्लाई करिवे सब जिंस बही रे नथिबो सिचुएशन को देखि कि आपण को इम्प्रोवाइज किबा इनोवेट करिया पे पड़ियो तो तार नेगेटिव्स कोन कि डिसएडवांटेजेस कोन मे इग्नोर थियोरेटिकल फाउंडेशन ता माने कोन ना लेट्स से वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस आईपीएल तो आईपीएल रे जो माने सब खेलु जंती कि जो माने सब एबे क्रिकेट खेलु जंती आ लेट्स से तेंदुलकर और द्रविड़ जेतले क्रिकेट खेलुतले तांकर कांसेप्ट कोन थिला स्पेशली प्लेयर्स हु आर टेक्निकली सो साउंड लाइक तेंदुलकर एंड द्रविड़ ओके तो से माने सेई जो लर्निंग कर्व टा को बेसी देखुले प्रॉपर्ली डिफेंड करिबे एंड ऑल दिस ठीक अछि बट एबे पांचटा बॉल रे लेट्स से 25 रन करियार अछि तो बहुत प्लेयर्स अछन आराम रे कर दोछन सेडा राइट तांकर शॉट टा एमिति खेलिबो कि सेमिति खेलिबो किछि नाही फास्ट बॉलर को भी स्वीप शॉट मारी की ओके 6 रन से माने पाउछ तो सेठी कोन ना थियोरेटिकल फाउंडेशन ऊपर होते concentration नहीं रन टा आसीबार अछि पूरा प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन राइट सो मे इग्नोर थियोरेटिकल फाउंडेशंस एंड आउ कोन तार डिसएडवांटेज डिफिकल्ट टू मेजर लर्निंग आउटकम्स ओके 20 टा बॉल रे जने 100 कर देला आपण कहि परियो ग्रेट प्लेयर जेतले ग्रेट आपण सुनील गावस्कर सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ विराट कोहली तांको कहउछंती ग्रेट तो सेतरे ये पिलाडे आछि 21-22 वर्ष पिलाडा इताठू भी कम 20 बॉल रे 100 बाडे देला ओके पूरा फ्लैम्बॉयंट शॉट्स खेली टेक्निक एते भलो नाही पर तो कैन वी से दैट से गोटे भलो ओके क्रिकेटर हे की बाहरला ठीक सेमती लर्नर जी आपणकर ओके इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द लर्निंग आउटकम्स कोन पई ना सी तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहला से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर देछि बट तार थियोरेटिकल फाउंडेशन थोड़ा एते स्ट्रांग न ही पारे सो डिफिकल्ट टू मेजर लर्निंग आउटकम्स ओके इन प्रैग्मेटिज्म एग्जांपल्स हला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ग्रुप डिस्कशंस एंड फील्ड वर्क एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम ठीक अछि you know in many universities there is credit transfer okay inter semester credit transfer ta mane kono कि आपण सेमेस्टर 1 रे मते 20 टा क्रेडिट पास करियार थिला मु पास कर पाल मु 10 टा क्रेडिट पास कर तो से कोन करिवे नेक्स्ट सेमेस्टर को आ 10 टा आपनकर तो से 10 टा मु कहबी ना ना मु 3 करी आ नेक्स्ट 3 टा सेमेस्टर कि 4 टा सेमेस्टर ताको स्प्रेड आउट कर दिबो फ्लेक्सिबल करिकुलम ओके सो एगुडा सब हैला एग्जांपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म नेक्स्ट जोटा आपण देखिबे दैट इज रियलिज्म तार कोन एज द नेम सजेस्ट realism realist concept taku se kochi what are the characteristics emphasizes facts objectivity and scientific knowledge so it should be objective not subjective okay second education should prepare students for real world
तो पाखापाखि आपण pragmatism सांगरे भी टिके टिके तार commonality अछि. It focuses on observation and classification. एटा हला realism रो characteristics. Proponents किए थिले Aristotle. Okay, say empirical observation माने observation led by data or experimentation. Okay, empirical observation जोटी results अछि मु खाली गोटे experiment 50 जन को ऊपर तार ए डाटा बाहरला, so that is empirical observation. ठीक अछि. Otherwise normal observation is basically कोन opinion. Suppose आपण को आबो बसंत गोटे बहुत भीड़ रेस्टोरेंट रे लोक माने खाउछथि, आपण ऑब्जर्व करंतु समस्त को. ओके, आ समस्त को ऑब्जर्व कला परे आपण साइकोलॉजी ओ इस बाकी जिंस ता ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखि कि से कोन कोन करछथि, यू आइडेंटिफाई आंको भीतर सबुटु कॉन्फिडेंट कि सबुटु नर्वस कि. बुझ परले तो आपण कोन करछथि, आपण थ्रू योर ऑब्जर्वेशन आपण से जिंसडा कहछथि, बट सेटा हम कि एक्सपेरिमेंट करनु एम्पिरिकल ये नहीं. ओके, तेणु से ओनली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपोर्टेंट. जेमति आपण एयरपोर्ट्स रे बहुत से ड्रग किंबा जो माने सब कॉन्ट्राबैंड जिंस नियंती इलीगल काम करंती तांकू से जो साइकोलॉजिस्ट माने थांती. ओके, जो माने रिक्रूटेड हेतांती पुलिस फोर्स रे कि स्पेशल फोर्सेस रे से माने सब पैसेंजर्स को देखु दियो. ओके, जा को लागी ये यार टिके ये काई टिके यू नो ऑड लागुची ताको आउरी डिटेल क्वेश्चन पे निया हैला कि जणा बेसी ओवर कॉन्फिडेंट लागुची से भी सेतरे पॉसिबल. राइट, सो सेगुडा कोन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपण तो सेतरे कि आपण एक्सपेरिमेंट करि नांती, जो थरे आपण एक्सपेरिमेंट करि कि डेटा बाहर करचंदी सेटा हैला एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन. तापरे फ्रांसिस बेकन कहले इट इज ए साइंटिफिक मेथड रियलिज्म ता, आ जॉन लॉके कहले ओके इट इज अ ब्लैंक स्लेट. ब्लैंक स्लेट माने गोटे काम सरला बस स्लेट लिभाओ पुनी नेक्स्ट काम. ओके, which is we will study tabula rasa. Okay, so they are the major proponents. There are advantages or disadvantages to discuss kariba. So there is strong scientific foundation, okay, for realism, and it is focused on practical and vocational training. Okay, so disadvantage kono, it may ignore emotional and spiritual needs. ठीक है, कहना सब जिंस तो अचीवमेंट ऊपर डिपेंड करछि कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो प्रैक्टिकल वोकेशनल. ओके, एंड इट कैन बी टू मैकेनिकल इमोशंस एतरे वैलिड न ही पारे. ठीक, तो गोटे पॉइंट आसीबो कि से लोक मशीन वाला ही हेजिबो, सेटा गोटे तार बड़ डिसएडवांटेज. राइट, किछ एग्जांपल्स तार देखंतु. स्टेम बेस्ड एजुकेशन. ओके, स्टेम कोन मैडम पढाइथिबे एटा कि न पढाइथिबो दी एटा वेरी इंपोर्टेंट ना बेसिक्स एटा एजुकेशन. What is STEM? Anyone? STEM कौन? STEM based education आपण कहउछंती. Okay. What is the meaning of that? STEM. नहीं लिखि दियंतु एटा बेसिक जिंसडा एटा आपण माने न जानले असुविधा हो. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एटा को जनरली प्राय एजुकेशनल सिस्टम्स रे बेसिक्स माना जाय. ए चारटा जिंस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, दैट इज STEM. ओके, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, so that is the concept of STEM. हैला, so it is STEM based education माने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ऊपर बेसी फोकस. ता माने कोन आर्ट्स गुडा लिटरेचर गुडा ताकू आपण एते फोकस करना. राइट, यूज ऑफ लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, एम्फसिस ऑन ऑब्जर्वेबल आउटकम्स. जो रिजल्ट्स गुडा देखा जिबा कथा. ओके, ऑब्जर्वेबल आउटकम्स आसीबा कथा. सो दैट इज द रियलिस्टिक एजुकेशन और रियलिज्म एज एन एजुकेशनल फिलोसफी. ओके, और लास्ट जोटा हमें देखिबा दैट इज एक्जिस्टेंशियलिज्म. ओके, तार कैरेक्टरिस्टिक कोन? इट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. एक्जिस्टेंस ठीक अछि, इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. Education should help students find personal meaning. Everyone is unique.
भगवान समस्त यूनिक बनै तो आपण को थ्रू एजुकेशन से निजे निजर से यूनिकनेस टा बाहर करिवार अछि ओके पर्सनल मीनिंग स्टूडेंट सेंट्रिक एंड dialogic approach means dialogue through okay existentialism come up and it is centered okay towards the student खाली idealism टा जनरली आपण कहि परबे टिके टीचर सेंट्रिक बाकी सब गोटे स्टूडेंट सेंट्रिक किए को लेवल रे और को वे रे सेटा हला डिफरेंस प्रोपोनेंट्स किए थिले सो जीन पॉल सार्ट्रे ओके सो से फ्रीडम आउ चॉइस कथा कहले मते कोन पढिबार अछि मु सेटा डिसाइड करी राइट आई डोंट लाइक मैथ्स तो जदि मते ऑप्शन दिया हला 10th रे मैथ्स नियंतु ने आउ कोन नियंतु दैट इज मु ऊपर चॉइस ता छोड़ा फ्रीडम एंड चॉइस तापरे मार्टिन ब्यूबर ओके आई दाओ रिलेशनशिप माने आई यू ओके आई यू रिलेशनशिप दाओ माने कोन मिडिल इंग्लिश रे जो कहल गटला दाओ होलियर देन दाओ गोटे फ्रेज अच्छी ना ताने जंती कि भाई यू नो मु आपण कोठू माने बेसी भलो काम करछि कि कोन एई टाइप रो कथा होलियर देन दाओ ओके तापरे Kierkegaard is basically individual passion and belief right so individual passion और belief माने कोन लोकर inherent interest को थरे अछि से हिसाब रे ओके things will be done so that is Kierkegaard advantage और disadvantage तो देखंतु it promotes self awareness and authenticity and disadvantage रे आ गोटे कोन encourages student agency right student निजे ही तारो डिस्कस करूछु ओके और स्टूडेंट निजे ही तारो कोन ताको दरकार कोन से इंटरेस्टेड सही चॉइस नबर ताको फ्रीडम टा अछि गॉट इट सो नेगेटिव्स कोन तारो डिसएडवांटेजेस लैक ऑफ स्ट्रक्चर में लीड टू कंफ्यूजन तो पिला ता इच्छा जा सेटा पढिबो ओके तो बहुत जगह रे करिकुलम सेमतिया दरकार तो जे प्रॉपर स्ट्रक्चर नथिवो ए करिकुलम टा आपन को एतिकी टाइम रे सारिवार अछि सो इट विल लीड टू कंफ्यूजन 2 मास रे सारिबी कि 2 वर्ष लगेबी ताकू पढिया पई डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इन लार्ज क्लासरूम तो एटा इंडिविजुअल काना से तो कहूची कि पर्सनल लेवल रे ओके रहइबो तो बड़ो क्लासरूम रे जोटी बेसी पिला अछन 30 40 खने पिला अछंती सेठी एटा इंप्लीमेंट करिवा टिके डिफिकल्ट होबो इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ रिसोर्सेस जदि सबु चाइल्ड आपण पर्सनली ताकू देखिबे तांकर कोन दरकार एंड ऑल तांको चॉइस को देखा जिवो इट विल रिक्वायर ह्यूज रिसोर्सेस सो लार्ज क्लासरूम से पॉसिबल नो जदि 1-to-1 टीचिंग हला कि गोटे टीचर अंडर रे 2 जण 3 जण रहले ओके ताहले मे बी इट विल बी पॉसिबल एग्जांपल्स देखंतु ओपन करिकुलम टेलर्ड टू इंटरेस्ट ठीक अछि so you know in many universities तांकर कोन सिलेबस केमति थाए सपोज गोटे मो एग्जांपल ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे 50 टा मॉड्यूल देथि यू हैव टू चूज एनी 4 आउट ऑफ दैट आपण को जो चारटा भल लागिला हैला तेनो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपण तो पढिले बट सेटा भी निजो हिसाब रे तो मशीन लर्निंग अछि ओके आउ कोन कोन स्पीच रिकॉग्निशन अछि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अछि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अछि जहा जहा सब आपण रहे बुझ पाले सो ओपन करिकुलम टेलर्ड टू इंटरेस्ट सेकंड हला डायलॉग्स रिफ्लेक्शन जर्नल्स एंड पर्सनल गोल सेटिंग एंड फीडबैक ओके सो डायलॉग्स रहला आपनकर जेतु इंडिविजुअल पर्सनल लेवल रहउची रिफ्लेक्शन जर्नल्स माने आज मु ए डायरी राइटिंग नथे ना जर्नल राइटिंग रिफ्लेक्शन जर्नल्स आज मते एतिकी टाइम मिलला मु एतिकी काम कली या टाइम वेस्ट हो गला या करथिला आउ टिके भलो होइतांता तो ताकू राति रे सोइला बेले मु लिखि दोबी कि जेतोर मु लिखिया ता लिखिबी ताकू तापरे गोटे एनालिसिस हिसाब रे 4-5 दिन रे थर थर देखुथि जो भूलटा हितला 3 दिन आगुरु से भूलटा आगु जेंति न हो रिफ्लेक्शन जर्नल्स पर्सनल गोल सेटिंग एंड फीडबैक हैला तो मो पई मु पर्सनल गोल सेट कली मु 3 दिन रे एतिकी एतिकी काम करबी तो तापर 3 दिन पर फीडबैक ता भी नेबी मु या भाबितिले हेला कि नहीं जदि हे गला तो बहुत भलो कथा जदि हेनी काई कि हेला दोस एनालिसिस आल्सो यू हैव टू डू ओके तो सेउडा एग्जांपल्स ऑफ
existentialism. Now come to questions. Who among the following is associated with naturalism? Plato, Dewey, Rousseau, or Locke? Okay, so Rousseau, okay. So Rousseau was very closely associated with French Revolution also. तांकर थॉट प्रोसेस गुड़ा सेमती सब से जो स्कूल्स प्रपोज करथिले कि पिला माने सेमती पूरा नेचुरल सेटिंग रे पढिबे. ओके, ही इज फेमस फॉर ए कोटेशन जोटा कि सब एसएबीएस रे आपण देखंती दैट मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स. ठीक अछि, त माने कोन पिलाटा एतले जन्म होउची लोकडा तो से फ्री ता हाथ को गोड़ बंद होइची, किंतु सोसाइटी ता ऊपर बहुत गुड़े सेमती रेस्ट्रिक्शंस छोट बेलू ही इम्पोज कर दो. एटा करनी टिके बड़ बड़ हम तापर एटा 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 करनी. ओके, एडल्ट हम ए जिंस गुड़ा तुम करिया कथा नुह. सो ही इज फ्री, फिजिकली ही इज फ्री, चलुची बुलुची सब कर पड़ती, किंतु बहुत गुड़े जिंस सोसाइटी ओके ताको रेस्ट्रिक्ट कर देइची कि तुमे सेटा करि परिबो. तो ताको कहया कथा सोसाइटी किए सेटा रेस्ट्रिक्ट करिया पे, नेचर जदि रेस्ट्रिक्ट करिवो अलगा कथा. बुझि परले तो सी तांकर फ्रेंच रेवोल्यूशन रे ये ही गले तापरे लाइक वोल्टेयर ही गले, मेनी अदर फिलोसोफर्स अपन देखिए जो माने फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करछन्ती. ओके, ही वाज वन ऑफ देम. सो रूसो emphasized natural growth and learning through nature, which are the core principles of naturalism. Next, which philosophy stresses learning by doing? Idealism, naturalism, pragmatism, and realism. So pragmatism of all the realism re bhi apanakara learning by doing the concepts अच्छी, but जेतले दीटा ऑप्शन अच्छी जोड़ा दीटा जाको ठीक हबो तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कोटा हबो सेटा चूज करिवार अच्छी, ताले सेटा pragmatism हबो. Pragmatism encourages hands-on activities and real-world problem solving, especially through the project method. Next, question 5. Which of the following best represents the realist approach? Emphasis on values and ideas, learning through freedom, scientific and empirical learning, or learning through nature? Okay, so C would be the answer, scientific or empirical learning. Realist approach jota. So realism focuses on facts, observation, and empirical methods in education through actual experiments. से experimental result जा आसीबो से हिसाब रे आपण निजर आउटकम टा बाहर करियो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these is a disadvantage of idealism? Neglect of values, सेटा तो नुह काना से वैल्यू ऊपर पूरा प्रॉपर एम्फासिस दिए. Over reliance on experience, too much focus on spiritual and abstract ideals, how encourages self-expression. So C will be correct. Disadvantage कोटा too much focus on spiritual and abstract ideals. तापरे बेसिक फोकस हेले कोन जने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रा मिस करछु. ओके, प्रैग्मेटिज्म रो उल्टा तार सबु जिंस प्रैक्टिकल, रियलिज्म रो सबु जिंस प्रैक्टिकल. तेनु सेठी आपण एथिक्स आ आपणकर स्पिरिचुअलिज्म टा मिस करछु. तो ताको बैलेंस करिवार अछि. बट जदि गोटे क्वेश्चन बहुत कॉमनली आसे कि मॉडर्न क्लासरूम बेसिकली को फिलोसॉफी ऊपर बेस्ड अछि. सो सेटा आंसर हैला प्रैग्मेटिज्म. हमर आजिकली जो मॉडर्न क्लासरूम अच्छी 70% इट इज ए प्रैग्मेटिक क्लासरूम. ओके, जो फाइनल आउटकम टा जोटा पिलांकर दरकार हबो आगु प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिया पे आपण सेया सिखो. आइडियलिज्म भी अच्छी बट 10-15% आपण कहि परियो. ओके, सो द फिलोसॉफी व्हिच मैक्सिमम is used nowadays, that is your pragmatism. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु. Which philosopher is associated with the concept of project method? तो एटा डायरेक्टली हमें देखिलु. Okay, that is A, that is Kilpatrick. So William H. Kilpatrick popularized the project method as a core principle of pragmatism. So say details of that method we will study. Next question. Which is not a feature of good teaching? Which is not a feature of good teaching? Clear objectives, mechanical delivery, student engagement, feedback and assessment. So mechanical delivery माने टीचर 10टा पॉइंट पढि दे के आसले से क्लास रे गोटे नोट रू कि कोदरू से 10टा पॉइंट कहि देले पिला को हबो. ओके, so that is the, okay, it is not feature of good teaching. Why?
देखो मेकानिकल डेलीवरी हेले पिला को भी इंटरेस्ट आसीबन जदि पिलांगर आपण लर्निंग बाय डूइंग करे परिबे किंबा किछि एमिति स्टोरी कहबे विजुअल एनिमेशन देखेबे जोतरे कि आपनकर पिला सेतरे एनग्रॉस्ड हेबे ठीक अछि पिला को सेटा भल लागे राइट सो वेरियस मेथड्स आर देयर फॉर एग्जांपल हमरो आईसीएसई स्कूल्स रे शेक्सपियरियन ड्रामा गोटे थाए राइट सेटा सब वर्ष से चेंज करंती मो टाइम रे थिला मर्चेंट ऑफ वेनिस ओके मो भाई टाइम रे थिला जूलियस सीजर तो जेंति सेटा चलता है एबे आउ कोन दिबो सो थिंग इज दैट ताकू जदि आपण पढिबे और सेबडा सब लेखा हिच कोन शेक्सपियरियन इंग्लिश किंबा जो मिडिल इंग्लिश रे ओके ता भाषाटा डी अलगा करंट मॉडर्न इंग्लिश तो आपण जते पढी की बुझिबे इट बिकम्स वेरी बोरिंग राइट राम स्कूल रे जे टीचर हमको 9 10th रे पढौतिले से मैडम से फर्स्ट दीटा क्लास मर्चेंट ऑफ वेनिस रो वीडियो देखैते सेतबेले ते यूट्यूब कोची 1998 कथा ओके द यूट्यूब एंड ऑल दिस थिंग्स वर ऑब्वियसली नॉट देयर ओके एंड सेते इंटरनेट भी आपनकर से सिफी इंटरनेट आउस्तला डायल अप इंटरनेट राइट अजीब अजीब साउंड करी मोस्ट ऑफ यू अपन तो जानि भी नथिबे सेडा ओके बट नेट रे देखि देबे से डायल अप इंटरनेट जेतले कनेक्ट हुए से को प्रकार साउंड करे राइट एंड वेरी स्लो ठीक अछि तो आजिकाली रो लेवल रे तो काम भी करी होबा ओके सो व्हाटएवर बी द केस तो से सेटा को तारा टेप्स आनी कि हमको स्कूल रे देखाइतला 2 days पर्यंत कारण दीटा पार्ट रे थिला 4 घंटा तो सेथरे 60% में बुझी गलु तापर जेतले एक्चुअल ओके एक्ट 1 एति की सीन तो सेटा हमें रिलेट कर पला अच्छा अच्छा ये आस्तरा ये आ कहूची ता शिप उडी जाई कि एबे से तारो इंफॉर्मेशन ता दबो तो आराम रे हमें बुझी परलु जिंसटा राइट तो सेठी भी टीचर को सही टाइप रो किछु करिया कथा खाली मैकेनिकल डिलीवरी रे ओके स्पेशली छोटो पिलांग पई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज थिंग्स तो सी वुड बी द आंसर नॉट ए फीचर ऑफ गुड टीचिंग effective teaching should be adaptive and engaging not mechanical or monotonous right next question 10 excuse me non-formal education is best represented by which military training non-formal education okay university degree open school for adults kindergarten teaching so open school for adults right non-formal education का characteristic कौन flexible part time focuses on skill development outside the formal system तो सेटा हला non formal ठीक है नेक्स्ट तो एटा में जो सब देखिलु हमें पांचटी जो एजुकेशनल फिलोसॉफीज देखिलु तार कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोपोनेंट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज और एग्जांपल देखिलु आउ दीटा जिंसो इंपोर्टेंट हमें देखिबा कोन करिकुलम केमतिया हुए और रोल ऑफ टीचर कौन था तो आइडियलिज्म एज आई टोल्ड यू टीचर इज द अथॉरिटी ओके तो स्टूडेंट्स लुक अप टू द टीचर टीचर जा जा करछन से माने बहुत टाइम रे ताको इमिटेट करिया के चेष्टा करिवे सो ही इज ओके एज अ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल गाइड ही हेल्प्स स्टूडेंट्स रियलाइज देयर हायर आइडियाज एंड यूजेस डायलॉग क्वेश्चनिंग एंड लेक्चर्स ओके आइडियलिज्म राइट करिकुलम केमति रहबो आइडियलिस्टिक करिकुलम the focus को थर रहउची ethics ऊपर रहउची values ऊपर रहउची humanities okay literature philosophy ता ऊपर focus हो minimal focus on vocational training जो जिनसडा ताको सिखेले से आगु गोटे जॉब कर परिबो कि gainfully employed हे परिबो ता ऊपर although zero भी कोई परिबा नहीं किंतु minimal focus हो it encourages mental and spiritual discipline ठीक अछि rather than acquiring vocational skills तारा focus रोची mental और spiritual discipline ऊपर एटा idealism naturalism में जो देखिए role of teacher को as I told you teachers are basically facilitators okay facilitator and observer से observe करियो allows natural development without interference तो प्रथमे जब एग्जांपल ता देथि that is one of the best examples सेटा कोन टीचर फर्स्ट जनरल कहि देल देखो हमें आज एमति बाहर को जीवा नेचर को तो सेठी से बहुत गुडा एनिमल्स और इंसेक्ट्स का घर पर थिबो तुमे देखो ऑब्जर्व करो से तू जा शिक्षा कथा सिखो तुम तार लागिबो तो गोटे पिला जाय कि एंट रो ओके ता घर भांगी कि ता हाथ पसुतला ता एंट कामुड़ देला से कांदिला राइट सो से टीचर से ऑब्जर्व करिवो से सेठी इंटरफेयर करिवो राइट कामुड़ काहे कि ना ता पनिशमेंट दबार राइट टीचर को नाही
नेचुरलिज्म रे नेचुरलिस्ट टीचर को पनिशमेंट दबार राइट केवल नेचर को अछि नेचर पनिश करिवो ताको allows natural development without interference okay learning through free exploration पिला माने निजे बुलिबे देखिबे सेउठु से माने लर्न करे राइट सपोज गोटे क्लास होची फीचर्स ऑफ ए रेड पैंडा ठीक अछि तो आमे पिला को नै गलु हिमालयन जू को सेठी ताको रेड पैंडा सामना रे पिला को गोटे ग्रुप करी ठिया गलु सने रेड पैंडा को देखिले भलरे ओके तो से बहुत गुड जिन जानी पारिबो कि अच्छा रेड पैंडा रो बड़ नख अछि तार कोटटा ए टाइप रो तो से निजे लिखि पारिबो फ्री एक्सप्लोरेशन ओके सो सेटा हबो नेचुरलिस्ट टीचर रो रोल टा तापरे करिकुलम केमती रहइबो नेचुरलिज्म रे साइंस आर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज जेतु बाहर जाई सने एक्सप्लोर करिवे तो फिजिकल एक्टिविटी तो रहइबो साइंस आर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऊपर फोकस रहइबो avoids rigid textbook and fixed schedule okay तो सेटा पिला निजो पेस रे एक्सप्लोर करिवे राइट जे गोटे जिंस एक्सप्लोर कला से नेक्स्ट जिंस रे एक्सप्लोर करिवो बुझि परछन तापरे कस्टमाइजेशन एज पर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट को पिला को कोटा भल लागिला से हिसाब इट विल बी कस्टमाइज्ड राइट तो करिकुलम रो फोकस शेयर होय एबे प्रैग्मेटिज्म को आसीबा टीचर रो रोल कोन लर्नर को लर्नर एंड गाइड ही विल आल्सो लर्न and he will guide the he is basically a lighthouse hand holding करिवे पिलार निजे कर देबे निता पई काम ओके तो बते दे ए करियर अछि एबे तुमे कर किंतु जदी भूल करछि कहबे ओके को लर्नर एंड गाइड ना ना एटा जो कहले एटा भूल करो एटा एम्ति करियर अछि आउ थरे कर पुनी से निजे ट्राई करिवे ओके सो गाइड एंड को लर्नर नेचुरलिस्ट टीचर जेमति इंटरफेयर करिवनी प्रैग्मेटिक टीचर इंटरफेयर करिवो किंतु मिनिमल इंटरफेरेंस सो दैट इंटरफेयर करी तो बते दबो एटा भूल हैला आउ थरे आपण करन जेमति कि आंसर राइटिंग क्लास रे ओके जने यदि आंसर टा ठीक रे लिखु नांदी त कोन हम कहि दोछु एई पॉइंट रो आपण ताको ठीक रे लिखियो से नेक्स्ट आंसर टा ठीक रे लिखि दोछु सो करेक्ट हम से जिंसटा ताकर जो भूलटा अछि रेक्टिफाई जाउछ ओके सो एनकरेजेस इंक्वायरी डायलॉग एंड रिफ्लेक्शन वन साइडेड नो सबले से माने एनकरेज करिवे कि पिला क्वेश्चन पचारू इंक्वायर करू डाउट्स पचारू डायलॉग हो मोनोलॉग और डायलॉग भीतर डिफरेंस कोन मोनो मींस वन जणी ही खाली कहियो दैट इज अ टीचर ऑब्वियसली ओके तो आइडियलिस्टिक लेक्चर मेथड रे से हुए डायलॉग रे डाई माने टू ओके टीचर भी कोन कहबे स्टूडेंट भी कोन कहबे इंटरैक्टिव मोर इंटरैक्टिव एंड रिफ्लेक्शन आजी आपण एया पढले 2 घंटा रे हम एति की पढलु तो सफिशिएंट की ना हम किछि टाइम वेस्ट कर देलु ओके एई जिंसटा जदी हमें करिबानी काली ताले आउ 10 मिनिट एक्स्ट्रा मिल जिवो सो रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट खाली टीचिंग एप्टीट्यूड रे नुवा लाइफ रे भी रिफ्लेक्शन रो बहुत रिक्वायरमेंट अछि एटलीस्ट सोइला बेले अपन टिके इंट्रोस्पेक्ट और रिफ्लेक्ट करिवे मोर आज प्लानिंग ए थिला मु एया करि परली एया कर परली कोन ठीक कली कोन भूल कली ओके कोन ठीक कली जते इंपोर्टेंट नु कोनटा भूल कली आज दिन सारा सेटा जदी समस्त रिफ्लेक्ट करिकि सोया पे जिबे ताले नेक्स्ट डे रे आपन माइंड रे भी से जिंसटा थिबो एटा मु काली भूल करथि आजी भूल करिवो ओके किछटा जानि जे माने जानि कि हम करू किछटा सर्कमस्टेंसेस रहि जे राइट तो आजी कहितली घरे मते ब्रेड टोस्ट करिया पई बट मांकर सावित्री व्रत थिला से सकाळु बिजी थिले तो से परटा कर दै छ व्हाटएवर मतेडा भल लागेनी टोटली तो मु पार्टी कर देली तांको ऊपर सकाळु ओके सो सेटा को रिफ्लेक्ट करिवार अछि ठीक कोन कली सेटा तो रिफ्लेक्ट करबा ही कथा बट भूल कोन कली सेटा निश्चित रिफ्लेक्ट करिया कथा दैट मेक्स यू ए बेटर पर्सन दैट मेक्स यू मोर appreciative of what God has given you okay the reflection is very important so preparation for exam रे भी reflection रो बहुत बड़ा रोल अछि okay then promotes learning by doing pragmatic teacher जे से करी देबे नि स्टूडेंट को पई से ताको कहिबे बतेइबे एम्ति करंतु राइट थरे गोटे एग्जांपल देखे देला परे से कहबे आपण करंतु पिला करियो ओके से हेल्प करिवे त बट से करी देबे नि पिला राइट so promotes learning by doing so eta hala pragmatic teacher ro role tale curriculum kon hobo jehetu eta completely practical based तार मेन काम है कि एक्चुअल जो हमारा रियल लाइफ सिचुएशंस रे जेमति हमको हेल्प मिलिबो सो इट इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल
projects, problem solving and field visits segura okay curriculum ro focus re rahibo. Dynamic and socially relevant content. So content is dynamic, सबले change होची, static जिनस no. Socially relevant, actual problems, real world problems solve करिया पे जोड़ा help करियो. For example, communication, right? You know that जेतेबेले सब बड़ा बड़ा सब situation आसे, terrorist situation, hijack situation, okay, सेतेबेले जो सब आपनकर लोक माने जे कथावार्ता करिवे दीटा पार्टी भीतर, राइट? तो सेमती स्पेशलाइज लोक थांती, ताको ट्रेन कराइते सेति, ओके, ताको इमीडिएटली आनते एंड दे स्टार्ट नेगोशिएटिंग. तो नेगोशिएटर्स, प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स नेगोशिएट करिवे बिटवीन द टू साइड्स. टेररिस्ट को दियो मते एटा दियो सेटा दियो सेटा दियो, ठीक है सब मिलियो, ओके, किंतु ता पई या करिया पड़ियो. ओके, तो से नेगोशिएशन स्किल्स हलरे नेगोशिएट कले समस्त लाइफ बंची. ओके, आपण लागी जिवे कि आडू साडू कोन कहिबे ताले दे विल किल द यू नो द जो माने सब हॉस्टेज वर्सेस, राइट? तो डायनामिक और सोशल रिलेवेंट कंटेंट सेटा फोकस ऑफ प्रैग्मेटिक सिलेबस और करिकुलम, राइट? तापर रियलिज्म, रियलिज्म रे रोल ऑफ टीचर कोन पाखा पाखी सेम एज दैट ऑफ ए pragmatist टीचर. So authority based on knowledge, say जो domain रे से domain expert तेन ताकर knowledge अछि, he is an authority on that. Transmitter of factual and scientific knowledge, ता माने कोन एटा value free. So निजो opinion निजो value जुड़ा पिला को कहबार नाही तम एई जिंस उडा facts जुड़ा कहबे पिला ताकर opinion निजे तार फॉर्म करिवे, ठीक अछि? तो transmitter of factual and scientific knowledge, facts and scientific knowledge. Idealism रे कोन idealist teacher जे सी ओपिनियन ता भी कहबो, राइट? एटा भलो नु. एठी रियलिस्ट टीचर वैल्यू ऊपर को जीवन सी फैक्ट्स दे दबो, तापरे निजो वैल्यू निजो ओपिनियन फॉर्मेशन पिला तारो हिसाब रे करिवो. Encourages experimentation and observation. So everything based on empirical data, माने actually experiment करिकी आपण जहा भी result आडिले सेही result realistic education रे realistic teacher तारी ऊपर कथावार्ता करिवे. ओके, curriculum focus कोन रहबो? Strong emphasis on science and technology. ओके, जेमते हम STEM रो देखथिलु. Vocational and skill based education, facts, laws of nature and applied knowledge. एगुडा तार curriculum रो focus रहबो realism. बुझि पाले? Opinion आउ आपनकर ethics, values ता ऊपर एते गुरुत्व नाही, ठीक अछि? तापरे लास्ट आसिला existentialism, role of teacher. तो existentialism में हमें कोन देखिलु कि पर्सनल चॉइस ऊपर बेसी फोकस रोच. So he is a facilitator and supporter of individual growth. Okay, हमें आगु पढ़िया गोटे concept of individual difference. Individual difference माने कोन? Every child is unique, every individual is unique. जने जल्दी पढ़िबो, जने टिके डेरे पढ़िबो, जने भलो ड्राइंग रे अछि आ जने एते भलो नाही ड्राइंग रे. These are called individual differences. तेणु एई पर्टिकुलर एजुकेशनल फिलोसॉफी रे individual difference को account रे निया होछि. So he will be a facilitator and supporter of individual growth. Helps learners discover purpose. Everyone is unique. ठीक अछि, भगवान तो सब यूनिक करछन ना. ते आमो मुंडो रे सब पोस्टि बोली ए मो सांगो 2 वर्ष आगुरु पाई गला एटा मु पाई पाले, राइट? So that is in a way you are disrespecting God's creation, that is you. तो आपण भी कोड पर्पस पे भगवान बने छथि, यू आर आल्सो यूनिक. तो ए एक्जिस्टेंशियल टीचर रा कामटा हैला से जो यूनिकनेस ता आपण को सामना को आनिबो. He helps learners discover purpose. What is the purpose of their birth? Why they are in the world? Encourages student autonomy. आपण निज हिसाब रे निज लाइक्स डिसलाइक्स हिसाब रे कामटा करन. ओके, फ्रेंड करछु बोली सेटा कर देबी, टीचर कहले बोली सेटा कर देबी ना. आपण को इंटरेस्ट, आपण को पर्सनल इंटरेस्ट कोन सेटा करन, and he will also help you. Okay, that existential teacher will also help you in that.
राइट करिकुलम फोकस कोन रहउची इट इज फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज्ड जेंतु पर्सनल ओपिनियन ऊपर सेटा रहउची पर्सनल इंटरेस्ट और चॉइस ऊपर रहउची तो फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज्ड एनकरेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट आपण को जो सब्जेक्ट नबा कथा आपण नेबे 10th रे भी एबे बेसिक्स कर देची बहुत गुडे स्कूल छोड़ा छोड़ा कर देले कि पिला को मैथ्स बोल नामुनी तो से स्किप कर दे परियो मैथ्स ठीक अछि इंपोर्टेंस ऑफ इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट सो सेथरा आपनकर इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट रो भी किछि पार्ट्स रहउची ओके ऑल्दो नॉट लाइक आइडियलिज्म तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन 11 a curriculum that emphasizes spiritual development and philosophy reflects with which philosophy spiritual development और philosophy ऊपर जार फोकस सेटा है idealism okay idealism prioritizes moral and spiritual education especially in subjects like literature and philosophy तापरे question 12 a child allowed to explore and learn in a free environment is under which philosophy okay exploration of free environment रे so that is naturalism c our answer okay so naturalism emphasizes self directed learning in natural settings with minimal teacher interference okay teacher ro काम कोन से just बते देबे because naturalism को हैला nature is the best teacher okay nature to get better teacher हे परियो so you just help him basically student को help कर देबे basics उडा कहि देबे तापर से explore करो और यदि भूलभाल करिवो नेचर भी ताको बुझे देबो थ्रू नेचुरल पनिशमेंट ओके तापरे क्वेश्चन 13 को आसंतु which teaching method aligns most with pragmatism so that we have already studied और सेटा में से मेथड ता हमें भल रे पडिबा that is the project method so pragmatism supports practical learning through real world projects and problem solving question 14 को आसंतु which approach believes education should prepare students for real world challenges that is realism okay so एठी pragmatism देनी नले pragmatism और realism भीतर आपन को भाबिया पड़िबो so एठी pragmatism देनी जेतु एटा जति जा देछि सेतरे realism आपन नै परिबो यदि individual focus कहितांता then existentialism बेता so realism focuses on objective facts and skills needed to operate in the real world तापरे question 15 which philosophy supports individual freedom and personal meaning जोटा कि एपे जस्ट हमें डिस्कस करू that is existentialism existentialism is centered on individual choice meaning and self realization तापरे question 16 which philosophy is least structured and most child centered so that is naturalism least structured कहि कि कना से पिला ऊपर इंपोज करनी 6 मास रे कोर्स सार दियो 12 मास रे कोर्स सार दियो तुम्हें तुम पेस रे पढ़ो केते जण 15 दिन रे सारिबे केते जण 2 वर्ष लगेबे तो नेचुरलिज्म सेतरे किछि ओके जार 15 दिन रे सरला ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ओके जाको 2 वर्ष पर सरियो सी तापरे मूव ऑन करिवो निजो निजो पेस रे पिला बारे पढिबे नेचुरलिज्म एनकरेजेस फ्री लर्निंग विथ लिटिल स्ट्रक्चर टेलर्ड टू द चाइल्ड्स नीड क्वेश्चन 17 what would a realist most likely support in school practice आ भितरु But a realist कौन support करे? Realists are all about कौन? Facts, experiments, these things ना. Spiritual meditation session केबे भी नो. Moral education classes सेटा भी नो. Science lab experiments absolutely because से मैंने okay empirical data और empirical study ऊपर भरोसा करा दी. Open discussion forums that is also okay but choice भितरे सीटा सबुटु strongest. Science lab experiments. So realism emphasizes observable empirical knowledge through scientific methods. Question 18. A school offers customized curriculum based on learners' interest is applying which of the following? So that will be existentialism. Okay. Customized curriculum. Personally, student may all based on learners' interest is applying. Okay. Existentialism. Existentialism values individuality and customizes learning for personal relevance. बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज रे से थाए ठीक अछि ता माने कोन म जंती कहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ता अंडर रे 50 टा मॉड्यूल थिबो यू हैव टू पिक 4 मते स्पीच रिकॉग्निशन भल लागुची त मो स्पीच मते इमेज प्रोसेसिंग भल लागुची मो इमेज रे गली ठीक अछि मते 50 टा रु 4 टा चूज करियार अछि मो हिसाब तो सेटा एग्जाम बहुत वाइड ऑप्शन
कहीं डिफरेंट लोगों को ताको पर्सनल चॉइस हिसाब रे डिफरेंट जिंस दरकार तो सेटा एग्जांपल ऑफ ए एक्जिस्टेंशियल ओके एजुकेशनल फिलोसफी नेक्स्ट एग्जांपल्स किछि नबा सबुरो आइडियलिज्म रो एग्जांपल इंडिया रो देखिले स्वामी विवेकानंद's focus on spiritual education emphasizes on character building in Indian gurukuls and use of scriptures and epics in moral education Ramayana Mahabharata and others hela Swami Vivekananda abroad देखिले Plato's academy Athens रे Greece रे okay focus on dialectical method and moral reasoning right how education for justice and virtue so dialecticism kona that also we'll study next naturalism example from India jodi hame dekhiba naturalism which I was talking about is Gurudev Rabindranath Tagore's Shanti Niketan learning in natural surroundings and student centric and holistic model abroad re dekhile Rousseau's okay Emile so this Emile or Emily भी ताको कितना pronounce करंती what was this story जानी चंदी किए कहि परिबे स्टोरी टा वेरी माने बहुत ही गोटे भलो आउ टिके इमोशनल स्टोरी ओके गोटे पिलाटार राइट तो आज रो टास्क हैला से आपन को काली क्लास रे बिफोर स्टार्टिंग काल तो मोर क्लास नहीं मोर नेक्स्ट क्लास रहइबो मंडे ट्यूसडे ओके मंडे दिन तो you will tell me what is this story of Emile just जानी चंदी ताले कहि परिबे ओके it is the center of educational process child is the center of educational process and learning through exploration okay next pragmatism examples from India रे आपन socially useful productive work SUPW जोड़ा बहुत जन को से क्लास टा बहुत चिड़ी लगे ओके बट से तरह जा सब करा हुए सेटा एक्चुअली सोसाइटी की दरकार से स्किल टा सोसाइटी की दरकार SUPW ओके activity based vocational education and constructivist approach in new education policy 2020 okay constructivist approach एई हिसाब रे कोन ना रिसोर्सेस जा जा अछि आपनकर ताकू नै कि आपनकर गोटे किछि पॉजिटिव जिंस करिवार अछि ओके लूजली सेइंग तो अब्रॉड देखिले ड्यूवी जो जॉन ड्यूवी करो लैब स्कूल इन शिकागो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड ग्रुप वर्क community centered learning okay next realism India re science and math focused government schooling tapare new education policy 2020 tetre kon emphasis अछि a coding robotics STEM okay STEM kon just कहइतली कि समय aguru anyone who can now tell me what is STEM नहीं कहइतली जस्ट अधघंटा आगु स्टेम रो फुल फॉर्म टा कोन दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ओके बेसिक जिंस डाटा स्कूल रे बेसिक सब जिंस कोन पढावे जा ऊपर गवर्नमेंट एम्फसिस दोछ साइंस मैथ्स सो एस और एम गला और टी और ये गला टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टेम ओके यूज ऑफ लैब्स एंड प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स तापरे फ्रॉम अब्रॉड यदि आपण देखिबे वेस्टर्न यूरोप्स टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल बेस्ड एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एम्फसिस ऑन फैक्ट्स एंड इंडस्ट्री अलाइन्ड ट्रेनिंग ओके तो एटा एग्जांपल्स ऑफ रियलिज्म फ्रॉम अब्रॉड आउ किछटा क्वेश्चंस देखिबा व्हिच ऑफ द इंडियन एजुकेटर applied naturalistic principle in practice naturalistic principle okay so that is Gurudev Rabindranath Tagore C will be the answer Tagore's Shanti Niketan emphasized learning in harmony with nature okay tapare next SUPW in Indian schools is based on which philosophy? So that is pragmatism. SUPW, socially useful productive work, promotes learning by doing and practical engagement. So it revise comparison table आज जा जा पढ़ लू पांचटी educational philosophies in it UGC net paper 1 पे
आउ डिटेल्स रे आपण जदि पढियार अछि आउ भी बहुत गुडा पेरेनियलिज्म अछि मार्क्सिज्म अछि ओके एसेंशियलिज्म अछि राइट एमति और बहुत अछि 14 15 टा आपनकर एजुकेशनल फिलोसफी थाए तो आइडियलिज्म कोन इट डील्स विथ माइंड्स एंड आइडियाज मेजर प्रोपोनेंट थिले प्लेटो एंड स्वामी विवेकानंद नेचुरलिज्म नेचर एंड एक्सपीरियंस रूसो एंड टैगोर ओके pragmatism practical action okay आउ तार प्रोपोनेंट्स ले डेवी आउ गांधी जी तापर रियलिज्म फैक्ट्स एंड साइंस एरिस्टोटल एंड बेकन एंड एक्जिस्टेंशियलिज्म दैट इज इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ओके सार्ट्रे एंड ड्यूबर तो एटा गोटे शॉर्ट समरी भली आपण ओके माइंड रे रखिबे तो एतरे कोन ना जो जो एठी तो जहा दिया आइची सेटा तो बहुत बेसिक रो तापर टेस्ट रे जहा पड़िबो प्लस क्वेश्चन बैंक जोटा बही रे अछि ओके बही आई होप समस्त आनी देइचंदी ऑल ऑफ यू ब्रॉट और नॉट समस्त बही आनचंदी ना कि आन नांदी जो माने आन नांदी से माने ओके जाई की आनी देबे सेटा ओके गेट द बुक फ्रॉम द सेंटर बिकॉज़ नेक्स्ट वीक रू मु बेसिकली आई विल बी गिविंग यू रेफरेंस ऑफ बुक फॉर एग्जांपल ए क्वेश्चन टाको आसंतु पेज नंबर 17 तो बॉयटा तो पाके थिले आपण आसीबे ना पेज 17 को सो गेट द बुक फर्स्ट हला बॉयटा प्रथमे एंड देबे राइट तापरे नेक्स्ट आउ किछटा एमसीक्यूज देखिबा a school focusing on robotics coding and science clubs is following which of these so that will be realism emphasizes factual and practical knowledge such as STEM education तापरे a teacher using storytelling to develop moral values is applying which philosophy so B will be the answer idealism supports teaching through values morals and abstract ideas like storytelling question 23 a curriculum where students choose what and how to learn best represents that is existentialism personal choice okay existentialism promotes personal freedom and customized learning paths tapare 24 Tagore's educational approach is mainly inspired by which of these so C that is naturalism Tagore emphasized natural settings child's freedom and experiential learning 25% of the question NEP 2020 focus on experiential learning reflects which philosophy that is again pragmatism okay learning by experience so experiential learning is core to pragmatism learning and doing by solving problems 26 vocational training in NEP aligns with that is realism supports practical skills and factual training as reflected in vocational initiatives okay देखिए आपण गोटे जिनस रियलिज्म जोटी ऑप्शन देथिबो सेठी प्रैग्मेटिज्म प्राय पकै नथिबो काना से दीटा पाखापाखी बहुत ही सेम और जदि दीटा पकैला ताले आपण को देखिया पड़िबो कोर ओके क्वेश्चन टा कोन राइट 27 को असंतु द कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन as a lifelong process supports which view that is the dynamic view modern educational philosophies support dynamic continuous learning across life stages Then question 28, which is not a characteristic of teaching aptitude. So exam marks, seta teaching aptitude or characteristic more. Teaching aptitude involves personality traits, pedagogical ability, not just exam scores. Then question 29, who advocated education is manifestation of perfection already in man? Okay, that is Swami Vivekananda. I mean, education definitions right? So Swami Vivekananda emphasized spiritual self-development through education. Tapare question 30. That is the process where the teacher adjusts method based on learner's response is called that is C reflective teaching. Reflective teaching adapts methods based on feedback and students' understanding. Gote method padhala pila bujhi parleni then you change the method so that's a bujhi paribe tanko level. Okay. Question 31, which of the following is a trait of a good teacher? So, authoritarian tone. Okay, eta sange sang karo, eta emiti hi hobo. Tume jaha bhi hele eta karibo. Authoritarian tone. Idealistic teacher generally semti thibe.
इनफ्लेक्सिबिलिटी टाइमलाइन दिया हिची माने दीटा भितर खाता सबमिट हबो दीटा एक हेले मु खाता नेबी इनफ्लेक्सिबिलिटी को कारण पई पिला दे परलानी खाता ताको देखिबार नै रिजिड सिलेबस फोकस तो सिलेबस रे पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 दिया हिची मु सेति की पढेली मैं जो जिनसडा पचाउछो डाउट सेटा पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 बाहर अछि सो रिजिड सिलेबस फोकस ओके एंड डी हैला empathy empathy is you know one of the basic requirements to be a good teacher. Teacher has to be strict but has to be okay empathetic towards the student. So good teaching involves understanding and responding to students need, right? When which component of education process deals with interaction and clarity? So D will be the answer, that is communication. Communication links all components and ensures successful knowledge transfer. Okay, so Ajia mein basically we have seen around 30 questions. Okay, all these questions are basic level questions. ठीक है जी, आस्ते आस्ते हमें ठीक है एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को अभी तो हार्डली गोटे की दीटा एग्जाम लेवल क्वेश्चन थी आस्ते आस्ते हमें एग्जाम लेवल क्वेश्चन को जीवा राइट. So after the class I'll put the slides in your app तो अपन डायरेक्टली सेट भी जाएंगे ताको पढ़ी पारे. Okay, so we will stop here then. If you have any doubts ताले मते WhatsApp कर दे परिवे. Okay, particular ए पॉइंट रे ए क्लास रो एटा डाउट अछि बोली then मु अपन वॉइस नोट रे कहि देबी सेटा. Okay, fine, so we'll stop here then and we will meet next Monday. Okay, मोर जो क्लासेस Monday और Tuesday रहउछ. Right, thank you all, namaskar.